जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड रे एनी जियोलॉजिकल वर्क तीनटा प्रोसेस रे हुए इरोजन देन ट्रांसपोर्टेशन देन आसीबो डिपोजिशन so the different erosional process मोर एटा आसीबो डिफ्लेक्शन एक्शन so deflection action होची simple removal of the loose sand so the loose sand by sediments से remove हुए by wind action ताको deflection action कोंती तापरे abrasion आसीबो जो metal रे deflection action रे remove हेतिबे the metal that is lifted by deflection action they will collide with other structure जेति कि तुमरो तोरा तुमे रास्ता रे जाउछ पवन हला धूड़ी उडला जेति that is करा जो कोन deflection action then से धूड़ी तुम देहर बाजिला कि other structure रे बाजिला so that is called as abrasion so the material that is lifted by the deflection action they will bombard with other structure that is called as abrasion then your attrition so attrition the particle they also collide among themselves so particular lift hela se mane nije nije to भी collide हेबे ताको कोनती attrition so तीनटा मेन एक्शन आसीबो डिफ्लेक्शन एक्शन abrasion attrition जेतु wind अछि wind is dry so there is no chemical action here it जहां भी होबो mechanical action about physical action and then transportation there are three modes of transportation go to the suspension then the saltation the surface creep so suspension जो particle size बहुत smaller था जो देखो less than 0.05 mm अब रेडा 0.05 mm रू 2 mm greater than 2 mm particle size थियो खाली सब सरफेस क्रीप सो सस्पेंशन जो पार्टिकुलर ऑलरेडी सस्पेंडेड कंडीशन में थांती ताको सस्पेंशन पार्टिकल को जे जो पार्टिकल गुना तुमरो सल्टेटिंग इफेक्ट बा गोटे पार्टिकल फास्ट कोन हबो एंट्रेन हबो एंट्रेन हला परे किछि बाट मूव करिवो तापर पुनी बम्बाड हबो तळे देन बाउंसिंग इफेक्ट आसीबो पुनी मूव करिवो बा जोटा को डेई डेई जीवा कहउछ तो ताको हम कोनती सल्टेटिंग इफेक्ट तापर सरफेस क्रीप जोटा तुमर रोलिंग एक्शन रे जाए सरफेस सहित टच हे कि रहइबो रोलिंग एक्शन जीवो जो पार्टिकल साइज अधिक है ता कोनती सरफेस क्रीप कहि परिबो बा रोलिंग कहि परिबो एक्शन बा ट्रैक्शन बोली तुमे कहि परिबो सो एटा ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन तो सिंपल जोटी जगह तुमर वेलोसिटी बा एनर्जी ऑफ द वेदरिंग इरोजनल एजेंट जहार जोटी एनर्जी डिक्रीज करिवो से जगह से डिपोजिट द तनो इरोजन जतरे हुए सेतबे किछरा लैंडफॉर्म प्रोड्यूस हुए जतरे डिपोजिशन हुए एतले किछरा लैंडफॉर्म प्रोड्यूस हुए तो साको हमें कोन कोन जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स माने कि प्रोड्यूस बाय वेदरिंग बाय इरोजन एंड डिपोजिशन तो ये डिफरेंट प्रोसेस ऑफ इरोजन अनुसार तुम्हारा विंडर प्रोड्यूस हुए तो पास्ट तुम्हारा से हमारा डिफ्लेक्शन हलो ओएसिस डेजर्ट पेवमेंट आगे लैग डिपॉजिट लिख दो लैग डिपॉजिट so these are processes that produced by erosional action especially by deflection action का जो होची these are landform produced by deflection action तो कि हमडा आछिबो हमडा होची मोर जतले तुमर डिफ्लेक्शन एक्शन हुए लूज सैंड रा रिमूव है तो लूज सैंड जतले कंटीन्यूअसली रिमूव होबो इट विल एक्सपोज अ हार्डर सरफेस दैट इज कॉल्ड योर हमडा then मोर sometimes you will find loose metal up to certain depth so it will produce a hollow that contain deflection hollow or blown out कौन blown out then sometimes more blown out can depend to the water table on the depend हे पारे it will produce oasis kana एतले तुमरो deflection hollow टा depend हे water table को touch करिवो then it will filled by water that on the oasis जति कि desert lake तुम कहि पारि then lag deposit कोन सी जगह रे जदी pebbles deposit तांती and pebbles in between तुमरो कोन sand थिबे मतलब wind flow करिवो this sand will removed only the pebbles will left behind तो से कोन कोन lag deposit तो lag deposit रे जते कि sand particle present थांती
within the pebbles they are removed by continuous wind action and the pebbles are left behind. That is called as your lag deposit. And if the wind action further continues, then tomorrow pebbles can come closer by rolling action. तो gradually माने इतने wind continue करियो एमन को पाखापाखी पड़े पाखापाखी पड़े they will produce a pavement का जो थे चलिकी जानते रास्ता साइड जो न था पेवमेंट जो कि तुम पथर पैकिंग करके भी रखते जो देख पूरा गोटे सरफेस को कवर करे तो से भाया तुम मैंने कौन पाखापाखी हो गले आम कह डेजर्ट पेवमेंट. So these are features that produced by deflection action. Then तुम आसो abrasion. Then comes to abrasion. Abrasion तुम्हारा यार्डांग आसो ventifacts, pedestal rock, Erosion कहि परिबो wind window, wind breeze कहि परिबो. So abrasion means होची जेति कि पार्टिकल तुम लिफ्ट होची by deflection action. They will bombard with other structure to reshape that structure that will produce different abrasion landforms. So ये यार्डांग आसो. So यार्डांग is a ferrite group like structure. तो ये तुम यार्डांग प्रोड्यूस हुए जो कि alternatively harder and softer rock थांदी. Alternatively harder and softer rock present थांदी ने यार्डांग can say vertical column of harder and softer rock. The harder गुड़ा less easily weathered होती, sorry, more difficult to weather, softer part which more easily weathered, softer part गुड़ा more depressed होती. तो ये continuously wind गोटे direction में flow करता है, यार्डांग कैसे? And it is produced by can say differential erosion. So different rate of erosion at different part of the rock होची इसमें यार्डांग produce. So यार्डांग को तुम otherwise honeycomb structure बोले कहीं पर. तो ventifacts कौन जो wind faceted pebbles कौन सी भी pebbles ऊपर तुम्हारा long term पाई तो wind flow करीबा ताल से गोटे smooth surface create करीबा ताको कौन थी ventifacts. तो ताना वा गोटे sentence रे you can say wind faceted pebbles. So ventifacts जो face produce हुए smooth surface जो produce हुए गोटे particular pebbles बा कबल साइज ग्रेन रे मल्टीपल फेसेस प्रोड्यूस हे परिबा जदी विंड डायरेक्शन चेंज होछ. तो गोटे सिंगल फेज जदी प्रोड्यूस हो ताको कोनती एन कैंटर जदी दीटा फेज पे ताको ज्वे कैंटर कोनती जदी तीनटा होबे तारे ड्रे कैंटर कोन जदी मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ फेसेस प्रोड्यूस हे परिबा कोन से गोटे पेबल्स रे. तो पेडेस्टल रॉक. सो पेडेस्टल रॉक तुमर कोन तो कौन सी गोटे रॉक कलम रे तुम हॉरिजॉन्टल हार्डर सॉफ्टर पाओ न हले यू विल फाइंड ए हार्डर कैप्ड ऑन ए सॉफ्टर रॉक. द सॉफ्टर पार्ट ऊपर गोटे हार्डर कैपिंग भले थे तो जेतले विंड फ्लो करिवा तो सॉफ्टर पार्ट अधिक इरोड हबो तो हार्डर पार्ट लेस इरोड हबो सेति सॉफ्टर पार्ट मोर स्लेंडर बा मोर थिनर हे जो हार्डर पार्ट एंड रे तो एटा को लुक लाइक ए मशरूम शेप रॉक. तो एटा भी तमरो डिफरेंशियल इरोजन जो होची जति कि लोअर पार्ट ऑफ द लोअर सॉफ्टर पार्ट होची इजीली वेदर होची सेटा थिनर हे होची अपर पार्ट गोटे हार्डर रहला से अधिक ब्रॉडर हे करूची. अदर रीजन होची कि तमरो विंड भी इट कैन नॉट इरोड ऑन ग्रेटर हाइट अधिक हाइट पर से इरोड करि परिबो लोअर हाइट रे अधिक इरोड करि परिबो तेना विंड रो मेन इरोजनल जो प्रोसेस बाय सल्टेशन प्रोसेस सल्टेशन ट्रांसपोर्टेशन जो मटेरियल जाय से अधिक इरोड करे कने क्रीपिंग एक्शन अधिक इरोड कर परले सस्पेंशन पार्टिकुलर टू स्मॉल सेते अधिक इरोड करि परिबो. सो द इंटेंसिटी ऑफ इरोजन सबले लोअर हाइट रे थाय. दैट आल्सो अनदर रीजन कि तुम प्रोड्यूस हो गोटे कोन मशरूम शेप रा रॉक.
जिवजेन तुम हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक पाउथला तो जिवजेन गोटे टाइप ऑफ लैंडफॉर्म दैट प्रोड्यूस्ड बाय बोथ विंड एक्शन एंड फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन तो फास्ट फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन रे मोर रॉक टा इरोड हो जो फ्रैक्चर डेवलप होबा वीकर होबा देन विंड एक्शन जो इजीली वेदर्ड हिज तो एटा को तुमरो इन्वर्टेड इंकपॉट शेप भी कहंती इन्वर्टेड इंकपॉट शेप है ना तो एटा एमती देखा हुए जिवजेन टा ए तुम इन्वर्टेड इंकपॉट भाया देखा हुए स्ट्रक्चर तो ये तुम हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ हार्डर एंड सॉफ्टर रॉक थाए स्टोन लैटिस कौन छोटे हेटेरोजेनियस रॉक थी हेटेरोजेनियस रॉक रे तुम डिफरेंट कंपोजिशनल मिनरल थे जोटा सॉफ्टर मिनरल थे से माने विंड थ्रू रे रिमूव हो सपोज कौन रॉक अच्छी जो सॉफ्टर पार्ट रो सब रिमूव हो गला ताले तार न्यूमरस पोर्स सब क्रिएट हो ताको से कोन कहते स्टोन लैटिस कहते देखिए विंड ओनली रिमूव द सॉफ्टर पार्ट ऑफ हमें हेटेरोजेनियस रॉक then any tomorrow stone lattice रे जहाँ pore space होची if it will produce a passage through the rock तो जो passage produce है गला from one side to other side ताले सेटा को wind window बोली कहा जाए and with time जिसे passage टा more broader हैला ताले ताको कोई wind bridge so tomorrow stone lattice रो produce होची दिना so these are tomorrow aberration landform ଆଉ ତୁମର attrition ରେ you will find only one type of structure that is called millet seed sand तो पार्टिकल गुडा निज निज सहित कोलाइड करिवे माने फाइनल हेले माने मिलेट शेप रा ग्रेन प्रोड्यूस करिवे त कोन मिलेट सीड सैंड देखला तुमरो इरोजनल फीचर्स पूरा हमाडा पर डिफ्लेक्शन होलो oasis lag deposit desert pavement is produced by deflection action then adung ventifact pedestal rock giwgen stone lattice wind window wind bridge which abrasion then the millet seed and which attrition so these are all are erosional landform by wind the other depositional landform so depositional landform रे मोर broadly दीरे टाइप रे डिवीजन करा अछि गोटे सीट टाइप आ गोटे पाइल टाइप सीट टाइप रे तुम गोटे पाइबो लोएस सीट टाइप मींस होछि जे कोनोसी जगह तुमर विंड रो जहां भी इरोजनल बा ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल दे डिपोजिट लाइक ए सीट इट विल scattered over a larger area कि तुम कह पर गोटे जोड़ा कि गोटे ऊपर गोटे गदा है कि माने माउंटेन बड़ा न है कि पूरा सीट बड़ा खेली जिवे ताको कहते कोन सीट टाइप तो लोएस इज अ सीट टाइप ऑफ डिपोजिशन जोटे कि इट scattered over a larger area तो ताको कह जाय लोएस से लोएस रो बहुत इंपोर्टेंस अछि पार्टिकल साइज बहुत स्मॉलर थाए 0.003 टू 0.007 mm पर पार्टिकल साइज में पायो they are unstratified they are porous they contain more mineral so that the color of the loess is buff color or yellow color देखो ऑर्थोक्लेस थांती buff color और yellow color देखा हुए तासते माने very fertile लोएस उरा कोन अधिक fertile थांती पाइल टाइप पे तमर रिपल आसीबो रिपल और रीज आसीबो so ripple rees are asymmetrical deposition तो कि स्टॉक साइड था ली साइड था रिपल टी के फाइनल गेन हुए रीज मोर कोस्टर गेन तो रिपल तुम्हें मोर एलाबोरेटली सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर पढुछ किसी सेमती रिक्वायरमेंट नहीं खाली मन रखिबा रिपल रो हाइट होची लेस देन 5 सेंटीमीटर ए जगह इन मेन केस एंड रीज होची ताटू 5 टू 15 सेंटीमीटर भीतर आसी रिपल फाइनल गेन था एटा कोस्टर गेन था तो गोटे साइड आंकर स्टॉस था गोटे साइड ली साइड था स्टॉस साइड जेंटल था ली साइड स्टीपर था तो मेन इंपोर्टेंट डिपोजिशनल आसीबो तुमरा देयर इज ड्यून ड्यून होची सबटरो इंपोर्टेंट इन केस ऑफ विंड डिपोजिशनल फीचर ता सहित तुमरा लोएस भी आसीबो
So what is a dune? So dune is a mound of deposition with a definite summit में कह परियो जो थे कि गोटे टॉप साइड थे गोटे ली साइड थे. So फास्ट हम दीटा टाइप रो देखुछन गोटे होची हुआ जाए बारकान गोटे parabolic गोटे. So दीटा तुमरो both are crescent shape दीटा कोन crescent shape आछो तो बारकान भी crescent shape parabolic भी crescent shape. Difference होची तंकरो wind flowing direction. So this part is called as a horn. एटा कोन कहते horn बोली कहै छै बा तुमे wing बोली कहि परियो. तो बारकान केस रे जो वाड wind flow करची तमरो wing बा horn से डायरेक्शन थे parabolic रे तार opposite direction थे. तो बारकान the wing point towards the wind direction, parabolic wing point opposite to the wind direction. ठीक है दीरा crescent shape. Then तुम्हें ये हिसाब से डिवाइड कर परियो convex और concave side. तो इट तो wind flow करची this is called as your upwind, this is called as your downwind. it is सेवा तुम्हें एरा कह परियो upwind, this is called downwind. तो अपविंड जदि कन्वेक्स रहउछि ताले एटा बारचान हबो जदि अपविंड तुमरो कनकेव रहउछि ताले पैराबोलिक हबो. तापरे तुमरो बारकान जो थाए बारकान प्रोड्यूस इन ए लो सैंड सप्लाई रीजन, पैराबोलिक प्रोड्यूस इन हाई सैंड सप्लाई रीजन. पैराबोलिक बेसिकली तुमरो मोस्ट इंपोर्टेंट होछि इट इज फाउंड इन कोस्टल रीजन. कोन मिलिबो कोस्टल रीजन ने मिलिबो एटा होछि पैराबोलिक. एंड ऑल द टू टाइप्स ऑफ जो कहली बारचान पैराबोलिक प्रोड्यूस बाय single current flowing by wind flowing direction. तुमरो एटी wind flowing direction कोन सिंगल रहबो बा कांस्टेंट रहबो गोटे डायरेक्शन. तापर तुमे दीटा पछ गोटे होची गोटे ट्रांसवर्स तुमे कहि परिबो गोटे लॉन्गिट्यूडिनल. सो ट्रांसवर्स रे तुमरो विंड का परपेंडिकुलर फ्लो करथो टू द स्ट्रक्चर बट ड्यून को एटी भी सेला परपेंडिकुलर ही फ्लो करछ ना. ट्रांसवर्स ड्यून प्रोड्यूस परपेंडिकुलर द विंड फ्लोइंग डायरेक्शन. सो व्हाट आर द कंडीशन तुम ट्रांसवर्स ड्यून प्रोड्यूस फबा पे ट्रांसवर्स ड्यून आल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन. पैराबोलिक और ट्रांसवर्स दीटा कोन कोस्टल रीजन प्रोड्यूस होंती. ट्रांसवर्स ड्यून रे तुमरा एबंडेंट सैंड सप्लाई दरकार, लेस वेजिटेशन दरकार इन केस ऑफ कोन ट्रांसवर्स. लॉन्गिट्यूडिनल इट इज अ बाई डायरेक्शनल कंडीशन. एटा कोन बाई डायरेक्शनल टू तुमरा डायरेक्शन ऑफ विंड विल कन्वर्ज टुवर्ड्स द ड्यून. दीर अपोजिट डायरेक्शन आसीबे सेम डायरेक्शन आछि कि कन्वर्ज करे. तो इट इज आल्सो कंसीडर्ड बाई डायरेक्शनल. सो लॉन्गिट्यूडिनल ले विंड फ्लोइंग डायरेक्शन को पैरेलल तुम कह पारे प्रोड्यूस होछन जे माने तो कहती लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून जोटी कि विंड टा कन्वर्ज करछ. लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून भीतर जो स्पेस थाए दीटा लॉन्गिट्यूडिनल भीतर ताको बेयर डेजर्ट बोली कहै छै. कोन कहै बेयर डेजर्ट, बेयर डेजर्ट बोली कहै छै. तो चारटा टाइप रहला बारचान पैराबोलिक ट्रांसवर्स. देखो these three type they produce perpendicular to the wind direction, only this one is produced parallel to the wind direction. So longitudinal is tomorrow bidirectional, another is reversing is bidirectional, reversing dune. किंतु एठी तुमर करंट गोटे डायरेक्शन रो से कन्वर्ट करछि. रिवर्सिंग रे दे आर फ्लो अपोजिट टू इच अदर, अपोजिट डायरेक्शन रो विंड फ्लो कले जाय कि तुमर कोन प्रोड्यूस हो रिवर्सिंग ड्यून प्रोड्यूस हो ना अपोजिट डायरेक्शन. सो reversing, longitudinal or bidirectional, these three are unidirectional. तावल तुम्हारा स्टार ड्यून है ना मल्टी डायरेक्शनल. बाकी कौन कौन थी अदरवाइज रिवर्स बोली कौन अदर नेम कौन रिवर्स. तो स्टार शेप ड्यून कोच जोटे कि मल्टी डायरेक्शनल बा करंट जोटी विंड डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज होतो से जगह प्रोड्यूस हो. So
Barkhan parabolic transverse unidirectional longitudinal reversing होची bidirectional star dune होची multidirectional और तुम पूछो वेलवैक ड्यून तो जो longitudinal dune था it has a sharper crest तार crest टा कौन था sharp था but वेलवैक ड्यून रे these are longitudinal dune very large longitudinal dune where the crest is flat तार कौन थी वेलवैक ड्यून. So these are different types of dune. The geological work of ocean, same process में कहीं erosion. So the erosion, transportation, deposition है. So basically हमें erosional geological work of ocean जो क्वेश्चन है वो only confined to the coastal region. Basically हम कोड़ा coastal region कथा क्वेश्चन है coastal region ने केमती erode होची कौन. So erosion रे जेहेतु इटी water involve अछि तो first मोर hydraulic action आसीबो. Then usually तुम्हारा abrasion, then attrition, then solution action आसीबो. Then it compression आसीबो. आगे compression तो लिखियो. So the water involved था इसे तुम्हारा hydraulic action आसे जिसे similar to deflection action. तुम्हारे river रे भी same erosional feature रहेगा. तुम सेठी किसी कोई दरकार नहीं. तो hydraulic action रे तुम्हारा water इधर flow करे जैसे कि loose sediments remove हुए तब hydraulic action को आजे. तो abrasion रे जहाँ loose sediments हमारे water lift करते हुए से other structure bombard हुए abrasion, then attrition, mutual collision होची attrition. Then in case of tomorrow only ocean, there is another erosional process that is called compression. Compression में कौन है तुम्हारा coastal region में जो सब cave थांती, coastal region में जहाँ वो cave present थांती, तादरे कौन था water present था, आधा पर्यंत था, आधा फांका था जो तरीके की कौन था air था, ठीक है तो कौन था air था. Sometimes यदि तुम्हारा wave suddenly enter कला भीतरे यदि wave suddenly rising condition रे suddenly enter कला कि high tide condition suddenly enter कला ताले ये जो air गुरा कौन करती जहाँ present था entity they does not get sufficient time to escape. Suppose sudden water पसी करा so they will not get sufficient time to escape from the cave. तो से they will compress against the wall of the cave. तो जो water इटे rise करेगा से air को compress करेगा against the wall. Then the wall will break or become weaker. तब वो erode करेगा कि तुम्हारा hydraulic action हो कि abrasion हो attrition action by wind. तर जोटी तुम्हारा water involve अच्छी बने सिटी सबले solution action आसियो. जे कौन जार water involve अच्छी बने always solution action आसियो जो कि जो दा water से तो react करने carbonate region जो दिखती है ताले solution action ही पड़े. तो एक सब जगह mechanical means है वो solution टा हो जी कौन chemical means. एंड abrasion को तुम्हें corrosion कही परियो, solution को तुम्हें corrosion कही परियो. बड़ा chemical action. तो इधर तुम्हारा erosional process, then transportation rate ही तुम्हारा तीनटा टाइप रो wave तुम्हें पढ़लो जोटा कि गोटे breaker wave को आ जाए, गोटे backwash को आ जाए, आ गोटे longshore current. These are wave or current. They are responsible for transportation, erosion and deposition. So fine. Issue wave होची ना कौन? They are responsible for the whole geological work in the coastal region. So breaker wave जितने तुम्हारा wave break करे, then it will move from the sea to coast. ताको breaker wave कौन थी? Then केमिति break करे कौन करते? तुम already सेगुरा वो other environment condition ने पढ़ जो दाने backwards तले river sorry water तले आसियो
कोस्ट रु सॉरी सी रु कोस्ट को पुणी अगेन से कोन पुणी बैक कर जाए ता कोनती बैकवर्ड्स जो तुम लहड़ी आसीबो एमती पुणी फेरी जो जो आसीबाटो काम कोन करते ब्रेकर वेव सो आसिले से किसी मटेरियल नहीं के आसीबो डिपॉजिट करिवो गला बेला पुणी किसी मटेरियल नहीं के जीवो इरोड कर परिवो डिपॉजिट कर हला तो ब्रेकर वेव बैकवर्ड्स दीटा प्रोड्यूस होंती आ गोटे लॉन्ग शोर करंट प्रोड्यूस हुए लॉन्ग शोर कमे प्रोड्यूस हुए यदि कोनोसी जगह रे वेव टा अप्रोच करथिबो कोस्ट को एट एन एंगल से आ गोटे करंट प्रोड्यूस हुए पैरेलल टू द कोस्ट ताको कोनती कोन लॉन्ग शोर करंट सो लॉन्ग शोर करंट होची करंट फ्लोइंग पैरेलल टू द कोस्ट कोस्ट को पैरेलल जो करंट फ्लो करे केते फ्लो करबो जते बेले तुमरो कोनोसी भी कंडीशन रे वेव अप्रोचेस टू द कोस्ट एट एन एंगल तो लॉन्ग शोर करंट रेस्पोंसिबल फॉर metal transport parallel to the coast. So breaker wave, backwards, longshore current, there are three current that are responsible for transportation. In transportation processes are same. Suspension, saltation, surface creep. That's why other कौन सी transportation process नहीं. आ गोटा है solution. तो solution through रे भी transport होती है जो टाइप की dissolve एक material. Other process किसी नहीं. These are only simple responsible for these actions. मतलब इरोजनल लैंडफॉर्म्स से तुम्हारा So erosion landform is first of all sea cliff. Sea cliff which it is a vertical wall that present against the sea. So vertical wall can produce wave. So normally तुम्हारा vertical wall एंत देखो जोटा कि sea against ए form होता है. इधर water present था इतनी पर्यंत. तो आर base रे गोटे depression था कौन ता कौन थी notch कौन. So this wall is called cliff. Depression at the base of the cliff is called as your notch. So gradually तुम्हारे action of the ocean ray notch टा gradually larger way cave way and जो upper part गुरा अच्छी they will become unstable. So माने कौन है gradually unstable है then break कर जाए. तो तुम कौन सी vertical wall रो base को यदि खोली जीवो upper part टा कौन unstable है जो break कर जीवो तो gradually the cliff will retreat towards the land side. अब जितने ये ब्रेक करी जाए जो मेटेरियल गुरा ब्रेक कर जाए से पुनी एट द बेस ऑफ द क्लिफ डिपोजिट हबो तमे ताको वेव बिल्ड टेरेस कहि परिबो बा जो जगह रे तुमरो एक्शन ऑफ द ओशन इज मोर एक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ द ओशन इज मोर जहां मेटेरियल डिपोजिट है ओशन पुनी इरोड करनी इरोड करने ले गोटे सरफेस एक्सपोज हबो ताको वेव कट बेंच बोली कहै छै हम वेव कट बेंच दीटा जिनसे बुझ पाला क्लिफ जतले रिट्रीट करिवो फर्स्ट नोच एनलार्ज हबो देन क्लिफ ब्रेक करिवो क्लिफ ब्रेक कले दैट विल प्रोड्यूस सम मेटल और डिपॉजिट सम मेटल एट द बेस ऑफ द क्लिफ सो दैट इज इफ दैट इज नॉट रिमूव्ड बाय ओशन दैट विल डिपॉजिट देयर एंड प्रोड्यूस ए वेव बिल्ट टेरेस कोन वेव बिल्ट टेरेस if tomorrow ocean action is more then it will remove the material then that is called as a wave cut benches or wave cut bench so simple tomorrow because of cliff retreat जहाँ expose होगा ताकि wave built terrace और wave cut bench बोल पाए तापर headland bay तुम्हारा कौन प्रोड्यूस हुए यदि तुम्हारा along the coastal region along the coast तुम्हें hard और softer region पाइबो तो suppose धर डाला कोस्ट ये तुम रहला ओशन रहला कोन ओशन एटा ला कोस्ट तो कोस्ट किछ पार्ट हार्डर किछ पार्ट सॉफ्टर तुम यदि पाइलो अलोंग द कोस्ट ताले सॉफ्टर पार्ट पूरा अधिक इरोड हो हार्डर पार्ट पूरा लेस इरोड हो तो सॉफ्टर पार्ट रो अधिक इरोड हेले से माने प्रोड्यूस करंती बे को प्रोड्यूस करे बे आ हार्डर पार्ट कोनते हेडलैंड एवला प्रोड्यूस हो सपोज धरा एटी के वाटर पड़ाइछो
तो एटा हैला तुमरा ए पार्टरा बे हे गला ए पार्टरा हैला हेडलाइन तो बे कोटा जोटा ओशन टा इंट्रूड कर जाइथो लैंड को सेटा बे आ हेडलाइन जोटा लैंड टा प्रोजेक्ट करथिबो ओशन भीतर तो कोन हेडलाइन तो बे रीजन रे तुम्हारा वेव एक्शन डिक्रीज कर जाए बे रीजन कौन वेव एक्शन डिक्रीज कर जाए से जगह तुम्हारा बीच प्रोड्यूस हुए बाय डिपोजिशन अधिक बट जोटा हेडलाइन टा अछि इट विल प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द ओशन सो ओशन भीतर प्रोजेक्ट करते हैं तो हेडलाइन टा कौन होबे इरोड हुए ग्रेजुअली फ्रॉम द बोथ साइड से इरोड हेकी डिसइंटीग्रेट हे जे पूरा तो हेडलाइन जतरे प्रोड्यूस हुए देन इट डिसइंटीग्रेट बाय प्रोड्यूसिंग अ सीक्वेंस ऑफ फीचर फास्ट कौन हेडलाइन रे क्रैक प्रोड्यूस हो क्रैक टा कौन प्रोड्यूस करबा केव प्रोड्यूस करबा केव टा कौन प्रोड्यूस हो सी आर्क कोडे प्रोड्यूस करबा सी आर्क कौन प्रोड्यूस करबा जतले सी स्टैक जतले तुम्हारा आर्क टा ब्रेक हे जीवो जतले गोटे कलम प्रोड्यूस हो सी स्टैक तो सी स्टैक आवरी इरोड हे गेल ता कौन सी स्टंप बुझले So it is a sequence of landform that produce within a headland. कौन produce होगा C तुम्हारा cave होगा C arc होगा C stack होगा C stump. तो इतनी क्या तुम्हारा erosional feature produce by ocean. तब तुम्हारा depositional feature डिपोजिशनल फीचर फास्ट आसीबो तुमरा बीच और बार आसे कोस्टल ले दीटा मेन इंपोर्टेंस बीच और बार कौन सी भी कोस्टल रीजन रे देखिए एलम तो कोस्ट तुम पारला ले कि जहां वेव वॉश्ड सेडिमेंट्स वेव जो जहां सेडिमेंट आसे जदि एनर्जी कम थाए सेठी ओशन रो ताले से किछटा डिपोजिशन करे जोटी कि गोटे बीच प्रोड्यूस हुए हला जदि एनर्जी कम थिवो ताले सैंडी बीच हो जदि अधिक टिके एनर्जी थिवो ताले पेबली बीच हो रॉकी बीच जोटा तो बीच होची तुमरा डिपोजिशनल फीचर प्रोड्यूस बाय वेव वॉश्ड सेडिमेंट्स देखि ब्रेकर वेव बैकवाश एमान प्रोड्यूस करन हां तापर बार गोटे फीचर जरा प्रोड्यूस बाय लॉन्ग शोर करंट बार ओरा होची these are ridge within the basin within the ocean भितरे तुम्हारा गोटे ridge produce हो parallel to the coast ताको आजे बार प्रोड्यूस हो गुड बिकॉज ऑफ लॉन्ग शोर करंट एंड बार जितेबेले एक्सपोज वे टू द सी सरफेस ताको बैरियर बोली कह जाए कौन कह बैरियर तो बार टा कौन था समस्ट है जितने सरफेस को एक्सपोज होगा सी सरफेस को ताको कहते बैरियर आउ प्रोड्यूस हुए कौन स्पीच प्रोड्यूस हुए जोटा मेनलैंड को कनेक्ट था गोटे साइड रे तुम्हारा कनेक्ट ओपन था ओशन को आउ प्रोड्यूस हो तुम्हारा टम्बलो गोटे साइड रे तुम्हारा कनेक्ट था लैंड को गोटे साइड कनेक्ट था आइलैंड काना ये जो आइलैंड था इतले वेव आसे ठीक अछि ये वेव को रिफ्रैक्ट करे वेव रा स्पीड कम जाए जगह तेणु ये जगह से ता जो ली साइड अच्छी ली साइड रे डिपोजिशन हवा स्टार्ट हुए तो से तुम्हारा प्रोड्यूस गोटे बार टाइप जिनस रीच टाइप जिनस कहते टम्बलो टम्बलो कह सो दीज आर तुम्हारा डिपोजिशनल फीचर बाय ओशन जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्लेशियर ग्लेशियर कौन आगे देखिए सो ग्लेशियर इज मूविंग आइस तो जो तुम कौन सी जगह above the snow line होची that line that separate the permanent ice and seasonal ice so above the snow line जदि accumulate हवा ice ताले सब सीजन रे से को आइस हेक रहबे तो ग्रेजुअल accumulation रे जो स्नो accumulate हवा से कंपैक्ट हेकी तुमरो आइस प्रोड्यूस करिवो तो कंपैक्शन बेले तुम पोरोसिटी रिडक्शन हवा तो कंपैक्ट हेकी तापरे इट विल मूव डाउन द स्लोप बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ताको कहते ग्लेशियर तो ग्लेशियर जतरे मूव करिवो obviously it is heavier thing
तो जो मूव करे से इरोड भी करे ट्रांसपोर्ट भी करे एंड बिकॉज ऑफ इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन से लैंडफॉर्म प्रोड्यूस करे। तो फर्स्ट बार ग्लेशियर होची तुम 3 टाइप्स ऑफ ग्लेशियर तुम पढ़छो गोटे वैली ग्लेशियर गोटे कॉन्टिनेंटल आइस शीट होची पिडमंट ग्लेशियर। सो वैली ग्लेशियर जोटा नॉर्मली हायर अल्टीट्यूड रे देखा जाए वैली ग्लेशियर्स पड़े कोन हायर अल्टीट्यूड रे देखा तो ग्लेशियर जोटा पाउछ तुम आदर हायर अल्टीट्यूड रे पायो नहले हायर लैटिट्यूड रे पायो। तो वैली ग्लेशियर तुम हायर अल्टीट्यूड देखांती जोटा कि गोटे कोनसी वैली बा माउंटेनियस रीजन ने गोटे वैली रे कन्फाइंड थांती डाउन द स्लोप मूव करथांती और कॉन्टिनेंटल आइस शीट जोटा गोटे कोनसी कॉन्टिनेंट ऊपर स्प्रेड करथाय हायर लैटिट्यूड रे तुम पायो। पिडमंट ग्लेशियर दीज आर ग्लेशियर दैट प्रोड्यूस बाय कोएलिशंस ऑफ वैली ग्लेशियर एट द फुट ऑफ द माउंटेन। तो वैली ग्लेशियर जितने मूव करे डाउन द हिल से मेल्ट भी करे ग्रेजुअली स्मॉलर भी हुए तो एट द फुट हिल से माने जॉइन होती टू प्रोड्यूस पिडमंट ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जितने मूव करे तो तरे किछरा फ्रैक्चर बा वीक प्लेन्स क्रिएट हुए तो हम कहते क्रीवासेस। सो क्रीवासेस जो थाए तीनटा टाइप रो थाए गोटे गोटे ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल आउट होची मार्जिनल। सो ट्रांसवर्स क्रीवासेस जोटा प्रोड्यूस हुए इट प्रोड्यूस परपेंडिकुलर द मूवमेंट ऑफ द आइस। तो बा ग्लेशियर ये जदी मूवमेंट करछि ताको परपेंडिकुलर करके प्रोड्यूस होबा दिस वन इज योर ट्रांसवर्स कि परपेंडिकुलर करके मूवमेंट हो प्रोड्यूस हो। तो ट्रांसवर्स क्रीवासेस केतले प्रोड्यूस हुए जेतले along the valley along the path of the glacier if the slope increases the suddenly slope change हला ताले transverse produce हुए। longitudinal केते produce हुए जदि valley widening हबो longitudinal होची मोर crevasse that produce parallel to the ice movement बा glacier movement को parallel जोटा produce हुए सेटा कोन longitudinal crevasses। तो जदि कोनोसी narrow valley अछि suddenly तोर broader हला तो glacier कोन कले try to adjust with the valley width। तो एठी जोटा नैरो की ब्रॉडर हो ताले ग्लेशियर कोन एक्सपांड हो तो एक्सटेंड जते हबो ए प्रोड्यूस करिवो कोन योर लॉन्गिट्यूडिनल क्रीवासेस। तो एटा वैली वाइडनिंग जो होची एटा चेंज इन स्लोप जो होची ट्रांसवर्स एंड मार्जिनल इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर। सो ग्लेशियर जते मूव करूची यदि ग्लेशियर वेलोसिटी प्रोफाइल हमें देखिया ताले इट इज लाइक दिस द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ग्लेशियर मूव्स एट ए हायर रेट a greater rate than the marginal part। तो marginal part slow rate रे move करे central part more rate रे move करे तो सेति तार इज अ डिफरेंशियल मूवमेंट। तो सेति तुमरो ग्लेशियर रा मार्जिन ने एमति सब फ्रैक्चर क्रिएट हुए ता कोन मार्जिनल क्रीवासेस। तो तीनटा टाइप रहला गोटे ट्रांसवर्स गोटे लॉन्गिट्यूडिनल गोटे मार्जिनल। तो ट्रांसवर्स क्रीवासेस परपेंडिकुलर द मोशन प्रोड्यूस हो परपेंडिकुलर द मूवमेंट ऑफ द आइस longitudinal parallel to the movement of the ice marginal at the marginal part of the glacier। तो एटा increase in slope जो होची this produced because of valley widening this produced because of differential movement। so these are three types of fractures बा joints में कह पारो produced in glacier। हमरा आतरे तुमरो इरोजनल वर्क आसीबो ट्रांसपोर्टेशन आसीबो और डिपोजिशन आसीबो। तो इरोजन ले तुम्हें ब्लॉकिंग रैस्पिंग अवलेंचिंग। ट्रांसपोर्टेशन है तुम्हारा सुपराग्लेशियल एनग्लेशियल and so इसला तुम्हारा इरोजन ने प्लॉकिंग इज सिमिलर टू तुम्हारा हाइड्रोलिक एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन टाइप ऑफ थिंग जो कि ग्लेशियर लूज मेटल को पिक करे। तो लूज केमिति हुए बाय फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन कोनसी तुम्हारा वैली बेड रे बिकॉज ऑफ जेतु ग्लेशियल रीजन अछि फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन ने
the bed material will loosen, then it will peak by the glacier. तो glacier base रे कौन हुए rock bed गुरा attach है लगी जाए, then जितने से move करिवो that attached material से मैंने कौन करियो valley को erode करियो, so that part is called as rasping, बात में abrasion कर पाए. So plucking similar to hydraulic action or deflection action, जोटा कि मोर picking up the loose sediments, and that loose sediments when glacier move they act as a erosional tool देखि valley को erode करंती, that is called as your rasping. Avalanching, there is a mass movement of the glacier. During glacier sudden movement as a mass down the hill move करे सेतले erode करे. तब ट्रांसपोर्टेशन तमर सुपर ग्लेशियल आसीबो, एन ग्लेशियल आसीबो, सब ग्लेशियल आसीबो. सुपर ग्लेशियल किछरा मटेरियल above the glacier move करंती बा ट्रांसपोर्ट होंती, किछरा within the glacier move करंती, किछरा below the glacier move करंती. So above the glacier supra, within the glacier end glacial, and below the glacier subglacial. The erosional landforms हम देखिए था फास्ट देखिए. अच्छा वैली ग्लेशियर थ्रू कोई erosional landform होचे. As your shark, which is an armchair like structure in the produce way, but tomorrow glacier रहला. It is a armchair like structure that produced by both you can say rasping and plucking action. So shark रो base रे गोटे कौन थाए डिप्रेशन थाए लेक थाए ताको कौन दिया में टार्म लेक. So कौन छोटे माउंटेन है तुम्हारा shark produce हुए, it can produce on both sides of the shark produce हो, ताले both the shark will meet on a line, ता कौन देखो ना R8. तो तुम्हारा R8 अच्छी वो जोटी की दीटा shark meet करते. The horn ऐसे जोटी की if 3 or more shark meets they will produce a summit or point, जोटा कौन कौन pyramidal peak कौन थी बा horn बोली कौन दी तुम्हें तो कौन से mountain रा all side रे तुम्हें तो shark produce करीबो ताले से मन कौन उटे pyramidal peak produce करीबो ताको horn को आजे. Now उटे produce a coal, it is a depression along the arrays. तो along array जो कौन से depression रहेला ताको coal को आजे. So first class shark पर armchair like structure कोई परिबो, amphitheater basin structure कोई परिबो. तार बेस से सब लोटे लेक प्रोड्यूस हुए तब वजह टार्न लेक. तब दीरा शार्क जोट मीट करने से रहोचे एरेट. तापर 3 or more जोट मीट करिवे they will produce horn and the depression along the arrays called as coal. तापर तुम्हारा ग्लेशियल वैली प्रोड्यूस हुआ. ग्लेशियल वैली पता कौन कौन करते ग्लेशियल ट्रॉ बोली करते. So simple, these are U-shaped valley. Main importance होची these are U-shaped valley. These are carved by glacier or these are modified by glacier. ठीक है, already गोटे river valley थी वो ताको modify करो glacier, ना glacier निजे भी carve कर पाए. So दीटा टाइप रो तुम्हें valley पड़चो गोटे important होची hanging valley. Hanging valley. तो glacier इतने move करता है. mountain से जाए गोटे larger glacier था है. ताकि स्मॉलर ग्लेशियर रा मीट करत. तो लार्जर ग्लेशियर वैली ऑब्वियसली बेसी डीपर थाए, स्मॉलर ग्लेशियर वैली लेस डीपर. तो जो स्मॉलर ग्लेशियर को हमें ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर कहते. कौन है ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर बिकॉज़ दे कंट्रीब्यूट द मेन ग्लेशियर. सो ऑलवेज द ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर वैली इज ऑलवेज एट अ हायर एलिवेशन देन द मेन वैली. दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज योर हैंगिंग वैली. अब ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर रू ट्रिब्यूटरी वैली सपोज र इट रहले मेन वैली टा रोज कोन तळे रहत. तो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर जोटा मेल्ट करछि ता वाटर जतरे पड़े को ठीक मेन वैली को दैट प्रोड्यूस वाटरफॉल. सेट कोन गोटे वाटरफॉल प्रोड्यूस हुए. हैंगिंग वैली रु मेन वैली को जो वाटर पड़े सेटा गोटे कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल. तो ग्लेशियल वैली हला तमरा यू शेप अछि बा ग्लेशियल ट्रबल तुम कहबो. तापरे
तो truncated spore produce हुए. So this is a hanging valley. So it is at a higher elevation than the main valley. तो glacier ये पार्ट रे मूव करछि से ये जो देखछ सो शार्पेन ही जाए. This is called as your truncated spore. तो कौन है truncated spore? Spore को एटा सर्क हला, एटा टर्न लेक हला, एटा आरेट हला, एटा हॉर्न हला, कौन सी डिप्रेशन रेले कोल बोली को जाए. ये पार्ट देखो दिस पार्ट triangular faces will produce the truncated spore. Then when glacier will move, it produce striations, markings of create करे glacial scar बोली को which is an indication or indicative of a glacial environment. So glacial scar would produce सेटा important feature. Then tomorrow erosional feature आसीबो आ गोटे कोन Roches montonis. So it is a asymmetrical hill type of structure. कौन सा asymmetrical hill type of structure गोटे स्टॉस साइड थे गोटे ली साइड थे. So स्टॉस साइड ता तुम्हारा जेंटल ली साइड ता स्टीपर थाए और कैरेक्टरिस्टिक एगुरा सब जो पट साइड ता सबले जेंटल थिबो सेटा अब्रेजन हबो जोटा स्टीपर थिबो दैट साइड विल अंडरगो ब्लॉकिंग. So एपट साइड तुम्हारा अब्रेजन हबो एपट हबो ब्लॉकिंग. So एटा को हमें सीप बैक रॉक बोली कहते. So एक्चुअली एटा एम देखावे इधर ता कोन कहते सीप बैक रॉक. थोड़ा वैली ग्लेशियर इरोजनल फीचर्स. देन वैली ग्लेशियर तले आसे मोर माउंटेनस रीजन ऑफ फुट हिल ले को वे पिडमंट ग्लेशियर हे जाय कबे पिडमंट ग्लेशियर. सो पिडमंट ग्लेशियर उटे प्रोड्यूस हुई ता कोनती फियोर्ड्स और एब्जॉइड्स. तो ग्लेशियर गोटे मोर इरोजनल रीजन जोटा कि इट कैन इरोड बिलो सी लेवल. तो सी लेवल तळकु से इरोड कर पारे. सो ए फियोर्ड होची इट इज अ वैली or glacial valley which has a depth lower than the sea level. So when glacier carve its valley below the sea level, it is called as your abjoids. So if abjoid present in the coastal region, then abjoids are flooded by sea water. So sea water easily तदरे enter कर जाए. तो टला valley glacier रा erosional feature. Then transportation तमु कहली supraglacial and glacial subglacial. तो डिपोजिशनल फीचर जो ग्लेशियल डिपोजिशन हुए ताको कहते ग्लेशियल ड्रिफ्ट. कौन कहते ग्लेशियल ड्रिफ्ट. सो ऑल द ग्लेशियल डिपोजिट कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्लेशियल ड्रिफ्ट. जोटा कि तार मेन कैरेक्टरिस्टिक होची द ग्लेशियल डिपोजिशन आर अनस्ट्रैटिफाइड एंड अनसॉर्टेड. ग्लेशियल ट्रांसपोर्टेशन बहुत लेस डिस्टेंस पर्यंत हुए आ सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एटी किछि हुए ना. तेणु ग्लेशियर कैन इरोड और ट्रांसपोर्ट ऑल साइज ऑफ सेडिमेंट्स. तुम फाइनर टू नहीं कोस्टर पर्यंत सब इरोड कर पारिबो और ट्रांसपोर्ट कर पारिबो. एतमे जोटी भी डिपोजिशन करे इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्ट्रैटिफाइड और सॉर्टेड डिपोजिशन. तार मेन कैरेक्टरिस्टिक. So glacial deposition को glacial drift को तुम्हें till कहि परिबो खबर till जोटे unstratified deposition गोटे moraine कहि परिबो. Moraines are also glacial drifts but that produce at specific site. तो से अनुसार तार नेमिंग करा जाय तुमरा moraines. So moraine तुमरा दीटा टाइप रा मेनली डिवाइड हेछि. गोटे होछि moving moraine और गोटे stationary moraine. मूविंग रे तुम्हें पाइबो एनग्लेशियल लैटरल मेडियल सबग्लेशियल
बा तुम तो ग्राउंड मोरेन कहूछ। तो विथ मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर जो डिपोजिट हुए ग्लेशियल रिफ्ट तो मोरेन बोली कहूछ ताको मूविंग मोरेन कहजे। एनग्लेशियल होचे विद इन द ग्लेशियर जोटा प्रेजेंट थाए तो एनग्लेशियल मोरेन कहजे। लैटरल एट द एडजेसेंट साइड दी साइड जो ग्लेशियर जा डिपोजिट ताको एनग्लेशियल बोली कहजे। मेडियल होचे दीटा ग्लेशियर जोटी मीट करे। अब ग्राउंड मोरेन बिलो द ग्लेशियर जहार को ताको ग्राउंड मोरेन कहजे। फिर तुम्हारा लैटरल होचे एडजेसेंट साइड, मेडियल होचे व्हेन टू ग्लेशियर विल मीट विथ ईच अदर। स्टेशनरी दीटा आछिबो कोट होची रिसेशनल मोरेन और होची एंड बा टर्मिनल मोरेन। सो रिसेशनल मोरेन होची जेतेबेले तुमरो कोनसी ग्लेशियल जेते कोन ग्लेशियर इनिशियली प्रोड्यूस होची स्नो लाइन नो ग्रेजुअली मूव करो डाउन द हिल आसला परे से कंप्लीटली मेल्ट कर जाए। जो जगह से कंप्लीटली मेल्ट कर जगह जहाँ भी पाखे डिपोजिशन थी मोरेन्स थी डिपोजिट देयर तो सही जगह से स्टैग्नेंट होगा से ना कौन स्टेशनरी मोरेन बा एंड मोरेन जोटी की ग्लेशियर कंप्लीटली मेल्ट कर रिट्रीट कर जाए कंप्लीटली दैट विल प्रोड्यूस एंड मोरेन बा टर्मिनल मोरेन। समटाइम्स कौन ग्लेशियर जो मेल्टिंग फेज थाए तारे पॉज आसे किछि मेल्ट करिवो पुनी अगेन मूवमेंट करिवो किछि मेल्ट करिवो अगेन मूवमेंट करिवो किछि मेल्ट करिवो। सपोज ग्लेशियर एट अछि तो एटी किछटा डिपोजिशन हे गला मेल्ट हला पर पुनी से किछटा मूव करि गला आगु पुनी ए जगह किछटा डिपोजिशन देला तो एवला दी तार मेल्टिंग प्रोसेस रे मेल्टिंग फेजेस रे पॉज रहइबो ताले से रिसेशनल मोरेन प्रोड्यूस करिवो। किछटा मोरेन डेटी डिपोजिट हला पुनी किछ डिपोजिट हला तो रिसेशनल मोरेन भितरे कोन होय लेक प्रोड्यूस होय जिते थरा से पॉज करबा सेते थरा रिसेशनल मोरेन डिपोजिट हवा और इन बिटवीन रिसेशनल मोरेन तुम्हारा लेक प्रोड्यूस हो तो तुम ये सीरीज ऑफ लेक पाइबो ताको कहंती पाटरनोस्टर लेक कहंती पाटरनोस्टर लेक। जिते थरा पॉज हवा सेते थरा तुम्हारा डिपोजिट हवा वाटर। तो जदि तुम्हारा रिसेशनल मोरेन होची कोन जदि तुम्हारा पॉज फेज आसला जदि कंप्लीटली जो मेल्ट कर गला सेटा एंड और टर्मिनल मोरेन आसी। तो मोरेन हो कि टील हो कि ग्लेशियल रिफ्ट हो ऑल आर अनस्ट्रैटिफाइड। तो जोटी ग्लेशियर कंप्लीटली मेल्ट कर जाए द ग्लेशियल वाटर दे स्प्रेड ओवर ए प्लेन लैंड कारण फुटेले आसला माने प्लेन लैंड रे स्प्रेड कर जिवे तो दैट रीजन इज कॉल्ड एज योर आउटवाश प्लेन। तो कोन कहते आउटवाश प्लेन। तो आउटवाश प्लेन जो थाए you can say these are plain that covered by glacial melt water तो जो glacial melt water अभी कथा है now that melt water can also give some deposition or can give some landforms so से landform को हमें कहते हैं glaciofluvial landform कौन कहते हैं glaciofluvial landform। जो ग्लासियोफ्लुवियल लैंडफॉर्म्स था दैट ग्लासियोफ्लुवियल लैंडफॉर्म आर ऑलवेज स्ट्रैटिफाइड कहना जितने वाटर थ्रू जहाँ भी डिपोजिशन हुआ बड़ा चांसेस तार अधिक था कि से स्ट्रैटिफाइड और शॉर्टेड हुए। तो तुम्हें कौन भी वैली ग्लेशियर डिपोजिशन को केबे भी स्ट्रैटिफाइड करबे जदि कौन स्ट्रैटिफाइड डिपोजिशन आसुची इन केस ऑफ तुमरो टू ग्लेशियर कंटेंट तुम्हें पढ़छो दैट विल बी ग्लासियोफ्लुवियर और ग्लासियोलैकुस्ट्रीन ता जोगु ही तुमरो स्ट्रैटिफाइड आसी। तो जो आउटवाश प्लेन तुम ग्लासियोफ्लुवियल लैंडफॉर्म पाइबो तुम पाउछ गोटे होची केटल लेक जोटे पाइबो केटल लेक आ गोटे पाइबो केम्स पाइबो। सो केटल लेक होची जदि तुमरो तले ग्लेशियर मेल्ट करे सम आइसोलेटेड आइस मास माने ग्लेशियल वाटर सहित मूव करिकी दे विल डिपोजिट ऑन द आउटवाश प्लेन। सो आउटवाश प्लेन में सॉफ्टवेयर सेडिमेंट्स थाए तो कौन सी जोड़ा डेड आइस पीस कहते यानी कौन सी ग्लेशियर पार्ट बा कौन सी आउटवाश प्लेन में जेतले डिपोजिट हो से गोटे डिप्रेशन कर दो धर एटा धर डेड आइस मास। सो ये जदि डिप्रेशन करबा तब एटा आइस मास से मेल्ट करि गला परे से कोन जो गोटे डिप्रेशन ता रहि जो वाटर फील्ड एक
ताको कहते कौन केटल लेक। तो जोटी की these are depressions that produced by isolated ice mass जो produce हो। Cames are mound like deposition on the outer plane जोटा की stratified थाए। Sometimes कौन cames रू सॉरी केटल होल रू बा केटल लेक रू प्रोड्यूस हुए कौन गोटे केम्स। तो जो डिप्रेशन हो गला एमती तो ये तुम कौन वाटर फिल्ड होगा ठीक अच्छे वाटर फिल्ड हेले ग्रेजुअली जेहेतु डिप्रेशन अच्छे माने सेडिमेंट डिपोजिट हम सेडिमेंट डिपोजिट होगी कौन माउंट लाइक हो जाए जोटा आम कौन कहते केम बोली कहते केम्स बोली कहते। तो से केस रे एनी तुम केम्स दैट डेवलप फ्रॉम ए केटल होल आर कॉल्ड एज knob and kettle topography बा तुम्हें केम्स एंड केटल टोपोग्राफी कहि परियो ठीक अछि। तो केटल टा होची गोटे डिप्रेशन बा होल केम्स टा होची गोटे माउंट। तो केटल रो मोर माउंट प्रोड्यूस हुए आ गोटे ग्लेशियल लैंडफॉर्म प्रोड्यूस हुए ग्लेशियर फ्लुवियल बट नॉट इन आउटवर्स प्लेन सेटा आउटवर्स प्लेन में सेटा ग्लेशियल वैली रे प्रोड्यूस हुए है कोनती एस्कर कोनती गोटे प्रोड्यूस होची कोडे कहते एस्कर। तो एस्कर हूँ दीज आर स्ट्रेटिफाइड रीज लाइक साइनस डिपोजिशन है तो जिते ग्लासीयर डिपोजिशन हुए ग्लासीयर डिपोजिशन के साइनस शेप आसब ना किंतु जदि वाटर इनवॉल्व थाए ताले साइनस शेप आसे। तो ग्लासीयर कौन हो स्नो लाइन में प्रोड्यूस हो स्नो लाइन एबव देन ग्रेजुअली से स्नो लाइन बिलो with the help of gravity से मूव करे तो बिलो द स्नो लाइन आसे माने से मेल्ट करियो। तो जो ग्लेशियल मेल्ट वाटर अछंती दे पास बिलो द ग्लेशियर कौन दे ग्लेशियर तळ देकी पास करते जो ग्लेशियल मेल्ट वाटर अछंती जति ग्लेशियर मेल्ट वाटर ग्लेशियर तळ देकी पास करते बा द ग्लेशियल मेल्ट वाटर दैट पास बिलो द ग्लेशियर दे प्रोड्यूस द डिपोजिशन दैट इज कॉल्ड एज योर एस्कर। तो एस्कर होची साइनस रीज टाइप ऑफ डिपोजिशन व्हाट प्रोड्यूस बाय ग्लेशियल मेल्ट वाटर विद इन द ग्लेशियल वैली व्हाट प्रोड्यूस ग्लेशियल वैली रे प्रोड्यूस इट इज नॉट एन आउटर स्पेस। तो एस्कर जेहेतु ग्लेशियो फ्लुवियल कंडीशन में प्रोड्यूस होची इट इज आल्सो स्ट्रेटिफाइड तो कम स्ट्रेटिफाइड आसी। तो एटा तुमरो वैली ग्लेशियर एंड ग्लेशियो फ्लुवियल डिपोजिशन। तो देखो इरोजनल फीचर में कॉन्टिनेंटल आइस तो कॉन्टिनेंटल आइस शीट स्प्रेड ओवर द कॉन्टिनेंट उडा मूव करे ओवर द कॉन्टिनेंट। तो इट आल्सो कि ब्लॉक सम मेटल तो मेटल ब्लॉक कले तार आइस शीट रो बेस रे अटैच हो जते से माने मूव करंती माने मार्किंग क्रिएट करंती दुटा टाइप रो मार्किंग हो गोटे क्रिसेंटिक गज गोटे चैटर मार्क यदि कन्वेक्स साइड जोटा छी सेटा पॉइंट करथियो टुवर्ड्स द आइस फ्लोइंग डायरेक्शन ताले ता कोनती क्रिसेंटिक गज the convex side opposite to the ice flowing direction to the chatter mark. Then another erosional feature is crag and tail. In movement direction of the ice जो direction ice movement करते तो कौन सी erosional resistance structure असला like volcanic plug तो कौन सी volcanic plug आसी ताले गोटे फीचर asymmetrical feature प्रोड्यूस करते लाइक दिस जोटा आइस मूवमेंट डायरेक्शन तो जोटा स्टॉस साइड थाए सेटा स्टीपर हो जाए और ली साइड थाए जोटा जेंटल हो जाए ताको कोनती क्रैग एंड टेल जोटा अपोजिट ऑफ रोचेस मोंटोनिस जतरे कि स्टीप साइड स्टॉस साइड स्टीपर थियो ली साइड जेंटलर थियो। तो जोटा स्टीपर थियो से जगह ब्लॉकिंग हबो जोटा जेंटल थियो से जगह रैस्पिंग हबो। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्टिनेंटल आइस शीट। तो इट इज इरोजनल फीचर तार डिपोजिशनल फीचर गोटे आसो फीचर बाय कॉन्टिनेंटल आइस शीट हुजी ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स गोटे टाइप ऑफ तुमरो ग्लेशियल डिपोजिशन बा आइस शीट डिपोजिशन हां। सो एटा तर आइस मूवमेंट डायरेक्शन थाए जोटा कि स्टॉस साइड आरबी कोन थाए स्टीपर थाए ली साइड जेंटल थाए डिपोजिशनल फीचर इट इज अ डिपोजिशनल फीचर। सो जो ड्रमलिन्स थांती दे ऑलवेज फाउंड इन ग्रुप्स। सो ड्रमलिन्स कोन गोटे ग्रुप रे मिलत तो ड्रमलिन्स सेति पे कहै जाय बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी
was a basket of egg topography, which is Drumlin's main characteristic. मेरा तमरा glacier. So then जब हमें river को तो पास देखा drainage pattern and system जो कि river originate हुए. So river जो produce हुए छोटो-छोटो तुम्हारा tributaries मिशी की गोटा river produce करो. So tributaries केमिति originate होती ता commander drainage system and तांगर geometrical arrangement बा spatial arrangement जाओ भी ताको हम कौन दी drainage pattern. तो ड्रेनेज सिस्टम तुम्हारा दिटा टाइप रो अछि गोटे होची सेक्वेंट गोटे इनसेक्वेंट होची ड्रेनेज सिस्टम ठीक अछि सेक्वेंट होची दैट फॉलोज द स्लोप जो स्लोप फॉलो करे इनसेक्वेंट होची जोटा अगेंस्ट द स्लोप फ्लो करि परिबो जदी स्लोप चेंज होची से तार कोर्स से डायरेक्शन में मेंटेन करि परिबो ता कोनती इनसेक्वेंट सबले फ्लो करिवो कोठी मोरा स्लोपी बा हायर एलिवेशन लोअर एलिवेशन फ्लो करिवो जदी कोन जगह एलिवेशन चेंज होची से जगह यदि कंटिन्यू कला ताल ताको इनसेक्वेंट को जाय सेतमे कोनती दिस फॉलोज द स्लोप दिस डज नॉट फॉलो द स्लोप तो सेक्वेंट अंडर रे तुमरा आसीबो consequent ऑफ तुमरा subsequent obsequent resequent. So consequent is the main stream that follow the slope. Subsequent जोटा tributary stream ताको meet करंती जोटा follow the slope. Obsequent जोटी stream main stream को opposite जोटा move flow करे ताको कहते हैं obsequent stream. जो जगह तुम्हारा tributaries थी वो जोटा कि main stream को opposite flow करता था वो obsequent को. Resequent जोटा relief inversion region में produce हुए जोटी कि कौन सी valley change ही थी रीच को वा रीच चेंज ही थी valley को इतमें एटा सेकंड इरोजनल साइकिल को प्रोड्यूस हुए ता ना को रिसेंट प्रोड्यूस हुए तो इतमें रिसेक्वेंट को आ जाए इंटीग्रेटर दीटा आछो गोटो जे एंटासेडेंट और सुपर इंपोज्ड सो एंटासेडेंट होची जोटी की तुमरो जदी रिवर कोनसी स्ट्रीम फ्लो कर सपोज द राइट डायरेक्शन रे तो दिस पार्ट विल स्टार्ट टू अपलिफ्ट जोटा हमें कहि परिबा डाउनस्ट्रीम पार्ट यदि डाउनस्ट्रीम पार्ट अपलिफ्ट हबो रिवर स्टिल तार वैल्यू जदि मेंटेन करि परिबो तो एटर सपोज धर रिवर वैल्यू इन रहला तो ए जो पार्ट ता यदि अपलिफ्ट हला ताले दैट चांस ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यदि अपलिफ्ट हेले भी रिवर सही डायरेक्शन ने मूवमेंट करि परला ताले ता पूछनी कोन एंटासेडेंट तो केमति हबो जेति कि तुम्हारा सपोज धर कि वैली एमती फ्लो करची जेति के अपलिफ्ट हबा सेति के रिवर पुनी इरोड कर दबा वैली डिपेंड करियो तो से केस रे तुम्हारा अपलिफ्टिव रीजन रे भी रिवर से डायरेक्शन को मेंटेन कर परियो तो से कंडीशन कोन थाए तुम्हारा एंटासेडेंट रे रेट ऑफ इरोजन बाय द रिवर शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट सो दैट इट कैन मेंटेन इट्स कोर्स देन एंटासेडेंट आसे को इनसिक्वेंट अंडर सुपर इंपोज्ड रे जतले रिवर फ्लो करे मल्टीपल बेड को कट करियो सो गोटे बेड को कट कले से लोअर बेड को एक्सपोज करियो so that condition is called as superimposed so lower a bed ro different property thai still river jodi sei direction ne maintain kari parla taku superimposed kwa jaye that's why it all comes under insequent the insequent under asi so la drainage system sab la consequent sorry sequent gote insequent gote tar drainage pattern re देखियो हम कोन कोन छै So drainage pattern होची जोटा spatial arrangement और geometrical arrangement of tributaries तो फास्ट मोरा dendritic पाइबो dendritic drainage pattern trellis drainage pattern rectangular radial centripetal parallel annular pinnate herringbone so parallel आछो annular आछो pinnate आछो herringbone आछो आउटे barbed
सो डेंडिटिक तुमको खाली मन रखा पड़ो को टेरेन में देखा जाए व्हाट आर द स्ट्रक्चरल कंट्रोल एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ट्रिब्यूटरीज एंड मेन स्ट्रीम. सो डेंडिटिक पैटर्न होची तुमरा ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो कि डज नॉट फॉलो एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चरल कंट्रोल आप न थाए इतमें होमोजिनियस लिथोलॉजिकल टेरेन में देखा जिवो जो आइदर सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक गोटे टाइप रो रॉक थिवो एंड जेंटल स्लोपिंग रीजन थिवो. सो ट्रिब्यूटरी मेन स्ट्रीम को एक्यूट एंगल ले मीट करंती इन केस ऑफ डेंडिटिक. ट्रेलिज रे तुमरा अल्टरनेटिव हार्डर एंड सॉफ्टर रॉक रे मिलिबो बा तुमरा सीरीज ऑफ फोल्ड बा एंटीक्लाइन सिंक्लाइन रे मिलिबो जोतरे कि तुमरा वैली रीच कंडीशन थिबो तो सिंक्लाइन तुमरा मेन स्ट्रीम फ्लो करिवो ट्रिब्यूटरी तक आसी मीट करिवे. सो ट्रिब्यूटरी मीट करंती. सो ट्रिब्यूटरी तो एडाला मेन स्ट्रीम दिस इज अ रीच. सो ट्रिब्यूटरी विल मीट द मेन स्ट्रीम at right angle मीट करे ट्रिब्यूटरीज गुरा मेन स्ट्रीम गुरा निज निज सहित पैरेलल रहबे. ट्रिब्यूटरीज आल्सो पैरेलल टू देमसेल्व्स. ट्रिब्यूटरी भी निज निज सहित पैरेलल रहबे मेन स्ट्रीम्स आल्सो पैरेलल टू ईच अदर. सो मेन स्ट्रीम गुरा क्लोजली स्पेस्ड थिबे एठी एंड इट इज प्रोड्यूसिंग कोन अल्टरनेटिव हार्डर एंड सॉफ्टर रॉक और सीरीज ऑफ एंटीक्लाइन सिंक्लाइन रीज वैली सीरीज रे थिबो से जगह रे प्रोड्यूस हो. तब रेक्टेंगुलर प्रोड्यूस हुए ग्रिड लाइक जॉइंट पैटर्न रे होबे ग्रिड लाइक जॉइंट पैटर्न प्रोड्यूस हुए एठी भी ट्रिब्यूटरी मेन स्ट्रीम को राइट एंगल मीट करंती बट एठी डिफरेंस कोन आसीबो तुमरो एठी मेन स्ट्रीम गुरा मोर वाइडली स्पेस थिबे ट्रेलिज रे तुमरो मोर क्लोजली स्पेस थिबे. एठी ट्रिब्यूटरीज गुरा दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड ई गोटे केस रेक्टेंगुलर रे जोटी कि तुमे ट्रिब्यूटरीज रो 90 डिग्री बेंड पाइबो हां पाइबो 90 डिग्री पाइबो काहे ना से माने कोन गोटे ग्रिड लाइक पैटर्न फॉलो करत ग्रिड लाइक जॉइंट रे फ्लो करत तो दे फॉलो द ग्रिड पैटर्न सो दैट शेप दे शो 90 डिग्री बेंड. तबर रेडियल इट प्रोड्यूसिंग डोम रीजन कि डोमाल स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस हो मोर डोम हो बा तुम कहूछ लैकोलिथ हो डबली प्लंजिंग फोल्ड हो तो ये जगह सब रेडियल पैटर्न प्रोड्यूस हो जो कि स्ट्रीम गुरा गोटे पॉइंट रु डाइवर्स करथुई चारि गोटे पॉइंट रु कोन डाइवर्स करथुले ताको कहंती रेडियल. जदि गोटे पॉइंट रे मीट करथुबे आसी कि ताको कहंती सेंट्रीपिटल बा बेसिन. तो सेंट्रीपिटल दा बेसिन रे प्रोड्यूस हुए रेडियल दा डोम रे प्रोड्यूस हो. जदि कोनोसी रेडियल स्ट्रक्चर रे अल्टरनेटिव हार्डर एंड सॉफ्टर रॉक थिबो ताल सी डाइवर्स कला बेले सॉफ्टर पार्ट रा इरोड हबो तनो तुमरो डाइवर्स मूवमेंट सहित सर्कुलर मूवमेंट रहबो तो से केस ताको कहा जाए एनुलर पैटर्न कौन एनुलर. सो एनुलर से तुमरो मैच्योर्ड डाइसेक्टेड डोम रे देखा जाए जो कि इरोड हेतिबो जोतरे कि अल्टरनेटिव हार्डर एंड सॉफ्टर रखथिबो. देन ऐसे तुमरो पैरेलल पैटर्न तुमरो प्रोड्यूस हुए फॉल्टेड रीजन रे बा जॉइंटेड रीजन रे भी प्रोड्यूस हो जोतरे कि तुमरो मेन स्ट्रीम जोडा अछि ताको ट्रिब्यूटरीज किछि बाट पर्यंत करबे पैरेलल रे तो मेन स्ट्रीम run parallel for some distance to the tributaries but tributaries run some distance parallel to the main stream तापर से मीट करंती. तो एटा तुमरो स्लोपी रीजन रे देखा जाए स्टीपर स्लोप रीजन रे देखा जाए तुमरो वेस्टर्न घाट जोटा अछि सेटा तुमरो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न सब देखा जाए. तो सब पिनेट और हेरिंग बोन हेरिंग बोन तुम्हारा ब्रॉडर वैली रे देखा जाए कोडे ब्रॉडर रिवर वैली रे देखा जाए जो कि ट्रिब्यूटरी गुरा बहुत शॉर्ट पाथ फॉलो करंती ना स्ट्रेट पाथ फॉलो करंती एंड तुम्हारा पिनेट देखा जाए नैरो स्टीपर वैली रे. तो एटी गोटे रहइबो एटी गोटे तुम्हारा स्टीप क्लिफ रही परिबे एटी गोटे क्लिफ एपट गोटे क्लिफ रही ता मझे नैरो वैली रे फ्लो करथबो कोन मेन स्ट्रीम. तो ट्रिब्यूटरीज ताको आसे कि एक्यूट एंगल मीट करंती बट ट्रिब्यूटरी डजंट हैव फर्दर ब्रांचिंग अधिक ब्रांचिंग न था जोटा कि एटा सिमिलर हे जोगा छ डेंडिटिक से जो ट्रिब्यूटरी मेन स्ट्रीम को मीट करंती बट डेंडिटिक रे कोन ब्रांचिंग हे परियो बहुत अधिक लेवल ऑफ ब्रांचिंग प्रोड्यूस हे परियो बट पिनेट रे लेवल ऑफ ब्रांचिंग अधिक होबा नाही. दिस वन इज योर हेरिंग बोन दिस वन इज योर पिनेट. देन तुमरो बारबेड ड्रेनेज पैटर्न आसीबो जोटा कि रिवर कैप्चर बेल्ट प्रोड्यूस हुए जगह रे तुमरो मन रखथिबा तुमरो
ट्रिब्यूटरी मीट्स द मेन स्ट्रीम एट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रिब्यूटरी मेन स्ट्रीम विद ऑब्ट्यूज एंगल प्रोड्यूस मीट करिवो ताले सेटा प्रोड्यूस करो बारबेड तो बारबेड केतल प्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग रिवर कैप्चर कोड प्रोड्यूस हो रिवर कैप्चर जो प्रोड्यूस हो तो एडाला तुमरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न सो जो ड्रेनेज बेसिन था जो ट्रिब्यूटरीज पूरा मीट करते डिफरेंट पार्ट रे सो हमें मैथमेटिकल को रिप्रेजेंट करते डिफरेंट वे रे जगह में ड्रेनेज मॉर्फोमेट्री एनालिसिस बोली कह जाए ताले तुमर आसीबो कोन इंपोर्टेंट पार्ट रो खाली कहि दोछि तुमको है तो जो स्ट्रीम ऑर्डर कहते तो स्ट्रीम ऑर्डर इज द लेवल ऑफ ब्रांचिंग ऑफ ए स्ट्रीम जो लेवल ऑफ ब्रांचिंग था दे आर डिफरेंट वे रे मोर नंबरिंग करा जाए हला तो ईच ब्रांचिंग रो जो ऑर्डर दिया जाए है ना से डिफरेंट मेथड अछि तो हम दुईटा इंपोर्टेंट मेथड होछि गोटे स्ट्रालार आ गोटे स्रीप यदि स्ट्रालार मेथड देखिबा जोगरा सब ब्रांचिंग न थाए ताको फर्स्ट ऑर्डर बोली कह जाए तो सब ब्रांचिंग हेनी जोगरा हेका कुछ फर्स्ट ऑर्डर जहार किसी ब्रांचिंग नाही तो सब फर्स्ट ऑर्डर हम तो स्ट्रालार है सब मन रखियो दीटा सेम ऑर्डर जतले मीट करिवे द ऑर्डर विल इंक्रीज बाय 1 व्हेन टू सेम ऑर्डर विल मीट द ऑर्डर विल इंक्रीज बाय 1 गोटे एडिशन हो खाली ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर मिसले कौन प्रोड्यूस करेंगे एटा सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सेकंड मिसले थर्ड ऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे ठीक अछि फर्स्ट मिसले एटी सेकंड फर्स्ट मिसले एटी सेकंड एटी फर्स्ट मिसले सेकंड मिसले थर्ड बट डिफरेंट ऑर्डर जदि मीट करछन तो हायर ऑर्डर सेटा कंटिन्यू हो हला तो ता माने एटा हला तुमरा थर्ड ऑर्डर ठीक अछि सो थर्ड मिसलिटी फोर्थ ऑर्डर फोर मिसलिटी फोर्थ ठीक है तो ये स्ट्रालार मेथड दीटा सेम ऑर्डर मीट कले ऑर्डर विल इंक्रीज बाय 1 अब यदि श्रीप मेथड देखबा हमें ताले दीटा ऑर्डर यदि मीट करेबे द नेक्स्ट ऑर्डर विल बी द एडिशन ऑफ द टू ऑर्डर जोरा ब्रांचिंग नहीं सेटा फास्ट कम हो फास्ट ऑर्डर दिया जीवो तापरे मोर ऑर्डर चेंज होबो लाइक दिस देखो एटा फर्स्ट ऑर्डर सो मिसले एटा कम सेकंड ऑर्डर होबो ये फर्स्ट ऑर्डर मिसले सेकंड ऑर्डर होबो फर्स्ट मिसले सेकंड मिसले एटी कम 4 है 4 सेकंड मिसले 6 अब तो ऑर्डर विल ऐड तो नेक्स्ट कम होबो एडिशन होबो तो कोनते श्रीप मेथड So these are important ordering. गोटे पर्टिकुलर ऑर्डर रे जेतेटा स्ट्रीम थाए ताको कहते स्ट्रीम नंबर कौन स्ट्रीम नंबर तो स्ट्रीम नंबर होची नंबर ऑफ स्ट्रीम प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर पर्टिकुलर ऑर्डर तो कहि परबे एठी फर्स्ट ऑर्डर केतरा अछंती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो फर्स्ट ऑर्डर 11 टा अछंती है ना कि सेकंड ऑर्डर तुम सेबला कहि परबो केतरा अछि तो फर्स्ट ऑर्डर केते नंबर अछि सेकंड ऑर्डर केते नंबर अछि ताको कहंती कोन स्ट्रीम नंबर तादरो हम बाहर करंती गोटे बाइफर्केशन रेशियो सो बाइफर्केशन रेशियो कौन किन बाहर करा जाए so number of stream present in one order divided by number of stream present in the next higher order so suppose मैं कोई परियो number of stream present in first order divided by number of stream present in second order बात में बाहर कर number of stream present in second order divided by number of stream present in third order तापर stream length so stream length which is length of the
stream present in a specific order गोटे पर्टिकुलर ऑर्डर रे जिते सेगमेंट ऑफ स्ट्रीम थांती तांकर लेंथ को हुआ जाए स्ट्रीम लेंथ जब मीन स्ट्रीम लेंथ बाहर करिवो तारे कौन बाहर करिवो तो स्ट्रीम लेंथ divided by stream number so particular गोटे ऑर्डर रा जते सेगमेंट ऑफ स्ट्रीम थांती एंड नंबर ऑफ स्ट्रीम ताकर मीन स्ट्रीम लेंथ बाहरिवो ता दुरा हमें बाहर करते स्ट्रीम लेंथ रेशियो कौन बाहर करते स्ट्रीम लेंथ रेशियो पता वो मीन रेशियो कहा जाए स्ट्रीम लेंथ रेशियो जोटा होची मीन स्ट्रीम लेंथ ऑफ वन ऑर्डर डिवाइडेड बाय मीन स्ट्रीम लेंथ ऑफ नेक्स्ट लोअर ऑर्डर मीन स्ट्रीम सपोज हम कहबा मीन स्ट्रीम लेंथ ऑफ सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड बाय मीन स्ट्रीम लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दैट विल बी द स्ट्रीम लेंथ रेशियो कौन स्ट्रीम लेंथ रेशियो तो एटी बाइफर्केशन रेशियो इज वेरी इंपोर्टेंट तापर तुमर स्टालर मेथड जोरा अछि नंबरिंग इज वेरी इंपोर्टेंट तो मोस्ट ऑफ द टाइम रे क्वेश्चन याद आसे नेक्स्ट तुमरा आसीबो आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे ड्रेनेज डेंसिटी so drainage ratio is length of all stream present in a basin गोटे बेसिन रे तुमर जते भी स्ट्रीम सेगमेंट थे सबरो लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बेसिन तो सिंपल तुम्हें कहि परिबो स्ट्रीम लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया स्ट्रीम लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया तो एटा तुमर इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट एटा बहुत टाइम रे क्वेश्चन पड़े स्ट्रीम लेंथ बाय एरिया तो एटा तुम डिफरेंट एनालिसिस आउरी बहुत अच्छी बट ये पार्ट रा सब तुम इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आसे तुम इनिशियल तुम्हें डिटेल्स पढ़ो ताल तीनटा एस्पेक्ट डिवीजन कराई छी गोटे लिनियर एस्पेक्ट और एरियल एस्पेक्ट राइट तो से अनुसार तुम डिफरेंट लिनियर पार्ट पढ़ुछ कि एरियल पार्ट पढ़ुछ हैला तो एटा तुम मॉर्फोमेट्री एनालिसिस तापर जो इरोजनल वर्क of river geological work लिखा तुम्हारा क्वेश्चन ने जो कहली तुम्हारा डिफरेंट इरोजनल प्रोसेस सेम इटी कंप्रेशन आसीबनी ता जगह रे कैविटेशन आसीबो कोन आसीबो कैविटेशन आब्राजन को हम कहबा कोराजन आ जोटा सॉल्यूशन सेटा कोरोजन है ना मन रख ए हिसाब रे मन रख सो एटी तुमरा तो कंप्रेशन आसीबनी कंप्रेशन बदल रे कैविटेशन आसीबो एटी जोटी कि एडिज एक्शन थ्रू रे प्रोड्यूस हुए कैविटेशन आसीबो अदर सब सेम अछि है ना तो हम डायरेक्ट इरोजनल लैंडफॉर्म देखिबो मोर पटहोल्स अछि वाटरफॉल अछि जॉर्ज कैनियन अछि एरा सब आसीबो so potholes होची मोर बाउल शेप डिप्रेशन प्रोड्यूस हुए एटा बिकॉज ऑफ एडिज एक्शन प्रोड्यूस हुए नियर द वाटरफॉल प्रोड्यूस हुए द potholes लार्जर हुए ताले प्लंज पूल्स ताको कोनथे देन वाटरफॉल जोटी के वाटर गोटे पर्टिकुलर हाइट रो डिसेंड करथो सो जदी अलोंग द रिवर वैली तुम कोनोसी जगह रे रिलीफ डिफरेंस पाइला दीटा पॉइंट भीतर हाइट डिफरेंस पाइला वाटर गोटे पॉइंट रो आ गोटे पॉइंट को फॉल करियो तो ताको को जाय वाटरफॉल तो वाटरफॉल डिफरेंट कॉजेस जो प्रोड्यूस हो स्ट्रक्चरल कॉजेस जो प्रोड्यूस हो जदी फॉल्टिंग हो रिलीफ डिफरेंस क्रिएट करे नले इरोजन कोन मोर डिफरेंशियल इरोजन जदी अलोंग द रिवर कोर्स गोटे पार्ट सॉफ्टर पाइला डाउनस्ट्रीम जदी सॉफ्टर पाइला अपस्ट्रीम जदी हार्डर हला ताले डाउनस्ट्रीम पार्ट अधिक इरोड हेकी मोर रिलीफ डिफरेंस क्रिएट करियो राइट तो एमती कोर्स रे दर पट्टा तुमरा सॉफ्टर पाइला पट्टा हार्डर पाइला तो सॉफ्टर पार्टा ए जगहटा अधिक इरोड हबो ए जगहटा रिलेटिवली कम इरोड हबो तो ए जगह रे रिलीफ डिफरेंस क्रिएट हो तो कोंदे वाटरफॉल तो डिफरेंशियल इरोजन जो हबो जोति कि अल्टरनेटिव हार्डर एंड सॉफ्टर रहबो नल स्ट्रक्चरल कॉजेस जो हबो नल तमे हैंगिंग वैली से जगह रे भी वाटरफॉल प्रोड्यूस होछ वाटरफॉल इनिशियल स्टेज को हमें रैपिड बोली कहते जो जगह रे रिलीफ डिफरेंस एते अधिक है नथियो जस्ट खाली गोटे स्लोप हेतियो निक बेंड टाइप रो स्ट्रक्चर हेतियो ताको हम कहते रैपिड जोटा कि इनिशियल स्टेज ऑफ द वाटरफॉल तो वाटरफॉल सब ग्रेजुअली
दैट रिट्रीट्स टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम साइड आड़ को रिट्रीट कर चले वाटरफॉल आ समटाइम तुम वाटरफॉल स्टेप लाइक मैनर पाइबो ताको हम कैस्केड बोली कहू तापर जॉर्ज कैनियंस होची दीज आर वैली दीज आर वी शेप्ड नैरो वैली जोटा कि बेसिकली तुमरा यूथ स्टेज ऑफ द रिवर देखा जाए जोटी कि माउंटेनियस रीजन में ही देखा जाए सो जॉर्ज टा होची स्मॉलर कैनियन टा होची लार्जर बोथ होचंदी नैरो वी शेप्ड वैली बाउंडेड बाय स्टीप साइडेड वॉल तो जॉर्ज कैनियन कौन प्रोड्यूस होती वैली डिपेंडिंग जो तो रिवर जो वैली प्रोड्यूस करे इट प्रोड्यूस ए वी शेप्ड वैली कौन प्रोड्यूस करियो वी शेप्ड वैली प्रोड्यूस करियो ग्लेशियर यू शेप्ड आसियो रिवर वी शेप्ड आसियो तो तार वी शेप्ड जो यूथ स्टेज रे तार वी शेप्ड थाए क्लोज भी थाए जेते तुमरा मैच्योर्ड आरु जो सेते ओपन भी हे चले क्लोज भी थाए एटी कोडे जो ओपन भी जो मैच्योर स्टेज तो रिवर ग्रेजुअली जो लेन देन हुए प्रोड्यूस हुए कौटू माउंटेनियस रीजन रु तब ग्रेजुअली से प्लेन लैंड को जाए तापर ओशन रे फॉल करे तो जो प्रोड्यूस हुए से जगह रु इट प्रोग्रेस इन हेडवर्ड इरोजन तो कौन कहते हेडवर्ड इरोजन ग्रेजुअली वैली लेन देनिंग हुए कौटू हेडवर्ड इरोजन तापर डाउन कटिंग करे वैली ताको कहते वैली डिपेनिंग तापर लैटरल कटिंग करे ताको कहते वैली वाइडनिंग तीनटा केस रे रिवर टा प्रोग्रेस करे है तो जोटा माउंटेनियस रीजन अछि से जगह वैली डिपेंडिंग अधिक हुए जोटा प्लेन लैंड अछि सेठी वैली वाइडनिंग अधिक हो है ना a river can deepen its value up to sea level that is the base level of erosion river cannot erode below the sea level so the maximum limit जो था depending that is called as your base level of the river होला तापर आउ कोन इरोजनल फीचर हुए escarpment another feature जोड़ा प्रोड्यूस हुए बाय अल्टरनेटिव डिफरेंशियल इरोजन होची जोटी अल्टरनेटिव हार्डर सॉफ्टर थिबो बा फॉल्ट थिबो सो अलोंग द रिवर कोर्स रे तुम यदि कोन से जगह रे गोटे स्टीप साइडेड फेस पाइला जोटा प्रोड्यूस होची बिकॉज ऑफ इरोजन ता कोनते एस्कारपमेंट तो एस्कारपमेंट तुमर क्यूस्टा आसे हॉगबैग आसे सो हॉगबैग क्यूस्टा होची कि डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ द स्टॉक एस्कारपमेंट तो एबला एस्कारपमेंट थाए तो एटा तार स्कार फेस थाए तो अंकर जो डीप बा स्लोप थाए यदि हॉगबैग थियो ताले स्टीपर थिबा क्यूस्टा थिले जेंटल थिबा तो एस्कारपमेंट यदि तुमरो स्टीपर रहला ताले हॉगबैग कोनती यदि जेंटल रहला ताले क्यूस्टा कोन तो तुमरा आउ दिका स्ट्रक्चर आसीबो गोटा होची मेसा तो मेसा आला तुमरो फ्लैट टॉप थिबो कोनसी रिवर कोर्स रे यदि गोटे कलम ऑफ रॉक अछि जोटा कि इरोड हेनी रेजिस्टेंट हेई अछि तार फ्लैट टॉप अछि ताको कहवा जाय मेसा तो ग्रेजुअली मेसाटा इरोड हेकी राउंडेड टॉप हे जे ताको कहते ब्यूटी तो आइसोलेटेड टेबल माउंटेन इट्स कॉल्ड मेसा विथ फ्लैट टॉप आइसोलेटेड टेबल माउंटेन विथ राउंडेड ताको कहते ब्यूटी विद इन द रिवर वैली तापर जो ब्रेडेड रिवर गोटे इरोजनल फीचर ओ सर अनास्टोमोजिंग ये सब भी इरोजनल फीचर एक्चुअली सेरी ठीक हो छडा लास्ट को मेंडर फेंडर मिसे देखियो तापर रिवर टेरेस रिवर टेरेस which is तुम्हारा स्टेप लाइक फीचर ऑन द adjacent साइड ऑफ द रिवर वैली तो जो स्टेप लाइक फीचर हुए रिवर वैली ताको हम कहते टेरेस कहते सो रिवर टेरेस कैन बी सिमेट्रिकल कैन बी एसिमेट्रिकल सो सिमेट्रिकल जदी करेस्पोंडिंग स्टेप्स पूरा इक्वल हाइट रे थिबे बोथ साइड रे तार ताको सिमेट्रिकल कहते बा साइक्लिकल कहते बा पेयर्ड कहि पर आ जदी करेस्पोंडिंग स्टेप पूरा अनइक्वल हाइट रे थिबे तार एसिमेट्रिकल को अनपेयर्ड को नॉन साइक्लिक हला तो रिवर टेरेस प्रोड्यूस केमि हुए
जो तीनटा प्रकार प्रोड्यूस हुए इरोजन हो पारिबो डिपोजिशन रे हो पारिबो नहले स्ट्रक्चरल जो हो पारिबो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट बा टेक्टोनिक जो हो पारिबो तो मोस्टली हमर इंपोर्टेंट होई टेक्टोनिक तो रिवर जेतले मैच्योर स्टेज रे थाए बा प्लेन लैंड रे तले फ्लो कर थाए तो इट डज नॉट डू डाउन कटिंग से सब कोन करे लैटरल कटिंग करे वैल्यू वाइडनिंग करे तो समटाइम्स कम हुए बिकॉज ऑफ सम टेक्टोनिक एक्टिविटी द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द रिवर अपलिफ्टेड अपस्ट्रीम साइड ऑफ द रिवर कम अपलिफ्ट हो तो अपस्ट्रीम साइड रे अपलिफ्ट हो ताले ग्रेडियंट से जगह लोकली इंक्रीज करियो ग्रेडियंट कम इंक्रीज करियो ग्रेडियंट इंक्रीज कले किछि टाइम पर रिवर कम करो डाउन कटिंग करियो डाउन कले वैली डिपेंड हे वैली डिपेंड हेले वाटर लेवल खसिबो तुम दीटा साइड रे दीटा स्लोप प्रोड्यूस हो तो ए जगह जदी तुमरा आउटिके डिपेंड हे गला ए जगहटा तो ए जगह दीटा स्लोप बाहरियो ताको कहउछन हमें कोन स्टेप्स दाको रिवर टेरेस को जितेटा तुमरो नंबर ऑफ स्टेप्स थिबो सेते थरा रिजुवेनाइजेशन हेइथो जते नंबर ऑफ स्टेप थिबो सेते थरा रिजुवेनाइज हेइथो नले इरोजन कंडीशन में भी पारिबो ए कंडीशन में भी पारिबो है तो रिवर टेरेस प्रोड्यूस पई भी तुमरा रिजुवेनाइजेशन प्रोसेस होची बहुत इंपोर्टेंट का रिजुवेनाइजेशन ता मीनिंग होची कोन river attain youth stage during mature stage river attain temporarily youth stage during mature stage से जगह तुम्हारा rejuvenation जो वो river terrace produce तो sometimes तुम्हारा river terrace meandering रे देखा जाए लाइक तो meandering कौन था meandering is sinusoidal path of the river रिवर जेतले प्लेन लैंड रे फ्लो करे से कोन करे लैटरल कटिंग करे का लैटरल कटिंग करे लैटरल कटिंग जेतले करिवो तो जो पटे सॉफ्टवेयर पाइबो से पटे अधिक इरोड कर दिबो तो से अनुसार रिवरटा साइनस हे जाय होय साइनस हे तो साइनसिटी हमें केन बाहर करंती चैनल लेंथ डिवाइडेड बाय वैली लेंथ So sinicity हम कहले channel लेते हैं valley length. When this ratio is more than 1.3, then it is called as your meander. So तो कौन कहजो meander बोली कहजो. तो meandering रे कौन हुए तो गोटे पार्ट रे तुम्हारा इरोड हुए गोटे साइड रे इरोड हुए गोटे साइड रे डिपोजिशन जो साइड रे डिपोजिशन भी तक कहंती दैट डिपोजिशनल फीचर इज कॉल्ड एज योर पॉइंट बार वाज ए पॉइंट बार. सो वाटर तो ऐसे ए जगह आगे फुल फोर्स रे ए जगह आगे बम्बार्ड हबो तापर एटी बुली जाए देन ए जगह तुमरा डिपोजिशन दिए बिकॉज ऑफ लो वेलोसिटी कारण एटी इतले बाडे हबो आगे तार वेलोसिटी डिक्रीज करिवो सो देन इट विल प्रोड्यूस अ डिपोजिशनल फीचर हियर व्हिच इज कॉल्ड एज योर पॉइंट बार तो कोन कहते पॉइंट बार कहते हला मेंडर रे तुमरा दीटा टाइप रो आसीबो जदी मेंडर रे टेरेस वे होतो अछि एंट्रेंस्ड मेंडर और इनग्रोन मेंटर आसे तो जदि तुम्हारा इन मेंडर रीजन रे रिजुवेनाइजेशन हो देन इट विल प्रोड्यूस टू स्लोप्स धीरे स्लोप प्रोड्यूस करिवो द टू स्लोप्स आर सिमेट्रिकल तो आर कॉल्ड एंट्रेंस्ड इफ द टू स्लोप्स आर एसिमेट्रिकल दे आर कॉल्ड इनग्रोन तो जतले तुम्हारा मेंडर प्रोड्यूस पे द साइनिसिटी ऑफ द मेंडर ग्रेजुअली इंक्रीजेस ग्रेजुअली इतले साइनिसिटी इंक्रीज करे तो तले बहुत अधिक साइनिसिटी हे जो तो रिवर कैन नॉट मेंटेन द साइनस पाथ तो साइनस पाथ को कोन करसे मेंटेन कर परनी जो पार्ट रे जो साइनस पाथ रे मेंटेन न करी इट विल टेक ए स्ट्रेट पाथ से कोन स्ट्रेट पाथ न so it will detach a oxbow shape तुमरो वाटर बॉडी ताको कोनते हमें oxbow lake जोटा कि प्रोड्यूस केतरे जदी साइनिसिटी ऑफ द मेंडर इंक्रीजेस फिरला तुमरो इरोजनल फीचर्स हो देन जो तुमरो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इंट्रेंस्ड और
तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फास्ट हमर अलुवियल फैन आसीबो सो अलुवियल फैन इज ए फैन शेप डिपोजिशन प्रोड्यूस्ड एट द फुट हिल ऑफ द माउंटेन जोटी की रिवर टा माउंटेनस रीजन छाड़ी की प्लेन लैंड को एंटर करे तो से जगह तर वेलोसिटी डिक्रीज करे बहुत अधिक तो वेलोसिटी जतले डिक्रीज करिवो ताले जहा सेडिमेंट्स थिबो से डिपोजिट सो इट प्रोड्यूस at the foot of the mountain where river leaves the mountainous region enters the plain land तो alluvial fan produce हुए यदि less slope रहला ताले alluvial fan को जो more slope रहला ताको alluvial cone को जो तो alluvial fan multiple alluvial fan जतले meet करंती ताको को जाय बाजड़ा coalescence of alluvial fan is called जो बाजड़ा then तुम्हारा आउट आसीबो एटी flood plain deposit तो फ्लड प्लेन डिपोजिट होची दीज आर इन द एरिया एडजेसेंट टू द रिवर वैली साइड को तुमरो जो प्लेन एरिया थाए जेतले तुमरो फ्लड टाइम रे द वाटर विल एंटर इनटू दैट रीजन से रीजन को एंटर करजो तो ताको हमें कहते फ्लड प्लेन डिपोजिट सो फ्लड प्लेन डिपोजिट बेसिकली तुमरो प्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग फ्लड एंड ड्यू टू मल्टीपल फ्लड जो कौन हुए रिवर वैली साइड रे स्मॉल रीज टाइप रो डिपोजिशन हुए ताको हम कहते नेचुरल लीवेज कौन कहते बिकॉज ऑफ तुम्हारा कंटिन्यूअस फ्लडिंग जो रिवर वैली साइड रे स्मॉल रीज टाइप ऑफ डिपोजिशन प्रोड्यूस हुए ताको कहते नेचुरल लीवेज So natural leavage is the highest feature of flood plain deposit. Flood plain deposit कौन तुम जो बन्या वाले पटुमाटी चढ़ी जाए गोटे लेयर खाली चढ़ी जाए माटी जोटा कि भल कौन तुम कल्टिवेशन सेमती रिवर वैली एडजेसेंट साइड रे ड्यू टू मल्टीपल फ्लड गोटे रीज प्रोड्यूस हुए ताको कहते नेचुरल लीवेज जोटा बंध कहूँ नदी बंध कहूँ सेटा ही तुम नेचुरल लीवेज आर्टिफिशियल भी ताको प्रोड्यूस करा जाए आर्टिफिशियल लीवेज तुम कहि परिबो सेटा ला फ्लड प्लेन डिपोजिट तादर अंडर आछो नेचुरल लीवेज तापर आ गोटे आछो तुमरो ब्रेडेड रिवर होची रिवर जोटी बाइफरकेट कर जाए बा ब्रांचिंग हो जाए विद इन द वैली को हबो रिवर बाइफरकेट करिवो अगेन रियूनाइट हो ताको हम कोन ब्रेडेड रिवर तो एमती रिवर कौन होची बाइफरकेट हो जिवो बाइफरकेट हबो पुनी अगेन ए जगह आसी कौन हबो रियूनाइट हो जाए ताको हम कोन थी ब्रेडेड रिवर सो ब्रेडेड रिवर को कंडीशन में प्रोड्यूस हुए तो जदि तुमरो रिवर बैंक पूरा अधिक इरोजेबल थिबो जदि अधिक इरोडेबल थिबो रिवर बैंक पूरा तो अधिक इरोजन हबो अधिक इरोजन हेले सेति की सेडिमेंट से कैरी न कर पारबी सेडिमेंट विद इन द वैली डिपोजिट हे जो तो जो पार्ट पूरा बाइफरकेट करंती ताको ब्रेडेड बार कह जाए कौन कह जाए ब्रेडेड बार जोरा सैंड रो बार ही थांती एंड से माने फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग होती ब्रेडेड बार बार कोन कांस्टेंट होती बस स्टेबल होती शिफ्ट होती सेवा तुम यदि रिवर बाइफरकेट होउची अगेन रियूनाइट होउची बाय सम स्टेबल एलुवियम स्टेबल स्ट्रक्चर थ्रू रे जो बाइफरकेट हे कि रियूनाइट होउची जोटी स्टेबल स्ट्रक्चर पूरा वेजिटेटेड थिबो हला से जगह ताको अनास्टोमोजिंग और अनाब्रांचिंग तुम कहि परिबो अनास्टोमोजिंग और अनाब्रांचिंग बोली कहि परिबो दिस आल्सो एटा भी सही सेम जिंस कि जेटा रिवर बाइफरकेट करिवो पुनी अगेन रियूनाइट हो किंतु ब्रेडेड बार केबे वेजिटेटेड हे नथिबो कोनसे वेजिटेशन तातरे नथिबो खाली सैंड रो बार थिबो एंड सेटा फ्रीक्वेंटली शिफ्ट होतो दीज आर जोटा कि बाइफरकेट करने दे आर स्टेबल माने कोन थे स्टेबल थे होला ब्रेडेड बार और ब्रेडेड रिवर और रिवर डेल्टा देखिबा तो रिवर जतबे ओरिजिन टू नहीं कि से मूव करे गोटे मैच्योर स्टेज आसे देन ग्रेजुअली इट फॉल इनटू ए स्टैंडिंग वाटर
गोटे स्टैंडिंग वाटर फॉल करे बेसिकली ओशन फॉल करे तो से जो स्टैंडिंग वाटर मीट करे से जगह से डिपोजिशन दिए जोटा कि ओल्ड स्टेज फीचर तो जो तुम रिवर ओल्ड स्टेज अटेंड करे एंड फॉल इनटू द ओशन इन दैट पार्ट जोटी कि रिवर और ओशन मीट करती से जगह डिपोजिशन प्रोड्यूस हुए ट्रायंगुलर शेप रो ताको हम कहते डेल्टा कहते डेल्टा सो डेल्टा केतल प्रोड्यूस हुए दीटा कंडीशन प्रोड्यूस हुए जदि रिवर मैच्योर स्टेज अटेंड करछि जोति कि तार कैरिंग कैपेसिटी और नथिबो डिपोजिशन करिवो आ सी जो सी रे से फॉल करछि से सीटा लेस एनर्जेटिक थिबो द मोर एनर्जेटिक थिबो रिवर जहा डिपोजिट करिवो सब जगह इट विल इरोड इनटू द सी तो सेति पे मेन कंडीशन होछि रिवर डेल्टा प्रोड्यूस होवार river must attain mature stage and there is a calm and quiet sea so there is less energy so river ocean सब जगह erode करि पार नथो so delta तुमरो 3 टाइप्स रे डिवीजन कराई छी गोटे होची तुमरो एनर्जी अनुसार तुम कहले गोटे वेव डोमिनेटेड गोटे रिवर डोमिनेटेड और टाइड डोमिनेटेड तो जो तुम वेव एक्शन अधिक रोची से जगह को वेव डोमिनेटेड डेल्टा कह जाए तो वेव डोमिनेटेड डेल्टा रा मेन फीचर होची तुम बार प्रोड्यूस हो परपेंडिकुलर द रिवर और पैरेलल टू द सी कोस्ट को पैरेलल करी बार प्रोड्यूस हो वेव एक्शन ने जो शेप आसीबो से कॉस्पेट शेप डेल्टा प्रोड्यूस करियो हां कॉस्पेट शेप रा डेल्टा प्रोड्यूस करियो तो वेव एक्शन जोटी सेटी रिवर्किंग अधिक होबो सेडिमेंट रिवर्किंग अधिक होबो बिकॉज ऑफ वेव एक्शन एरा सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेव डोमिनेटेड डेल्टा जोटी रिवर डोमिनेटेड डेल्टा रिवर बहुत अधिक सेडिमेंट डिपॉजिट करथको है ना मोर लोड थिबा सेडिमेंट्स तो रिवर डोमिनेटेड डेल्टा गुरा सब कोन थाए ये फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ चैनल दिखाते रिवर डोमिनेटेड कोन थाए फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ चैनल थाए को रिवर डोमिनेटेड डेल्टा रे अबुलजन तक कौन दे अबुलजन चैनल अबुलजन जो थाए चैनल अबुलजन तुम टाइड डोमिनेटेड डेल्टा तुम टाइडल फीचर पाइबो टाइडल फीचर लाइक मोर हेरिंगबोन हो कि मोर मॉडरेप्स हो रिएक्टिवेशन सरफेस सब टाइड डोमिनेटेड डेल्टा पाइबो आ टाइड डोमिनेटेड डेल्टा आउट कैरेक्टरिस्टिक होची जहां बार प्रोड्यूस होबो दैट पैरेलल टू द रिवर चैनल को पैरेलल हेतिबो सी कोस्ट को परपेंडिकुलर हेतिबो गुडा टाइड डोमिनेटेड डेल्टा सो रिवर डोमिनेटेड डेल्टा जहां करे एलोंगेट टाइप ऑफ डेल्टा करे अरे एलोंगेट जो डेल्टा डिपॉजिट हुए द स्ट्रक्चर ऑफ द डेल्टा देखबा इट क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट तो होची मोर टॉप सेट कोन थी टॉप सेट फोर सेट बॉटम सेट सो टॉप सेट मोर रिवर पार्ट को रहे देन फोर सेट विद इन ओशन बॉटम सेट विद इन ओशन रहे तो जते तुम बॉटम सेट टू टॉप सेट आडू जीव से तुम कौन हुए एड़ा हुए तुम टॉप हेले एटा फोर एटा बॉटम तो ऊपर जीव से तुम्हें कोर्सर ग्रेन पाइब तुम कोर्सनिंग अपवर्ड सीक्वेंस देखाए रिवर डेल्टा तो गोटे ट्रांसग्रेसिव सीक्वेंस कह कौन ट्रांसग्रेसिव सीक्वेंस तो जो जगह तुम रिवर काम एंड क्वाइट जो ओशन काम एंड क्वाइट रहा जो टाइडल एक्शन अधिक नहीं रिवर अधिक इरोड करूनी तो से जगह तुम प्रोड्यूस हम कौन डेल्टा जो डेल्टा प्रोड्यूस हुई जो कि रिवर मैच्योर स्टेज रे फॉल करिगला ओशन रे कि ओशन रो एक्शन बहुत अधिक अच्छी तो से जो डेल्टा प्रोड्यूस हुई तो कहते एस्चुआरी जो डेल्टा प्रोड्यूस हम ना तो एस्चुआरी इज ए ट्रांसग्रेसिव सीक्वेंस है ना डेल्टा इज ए रिग्रेसिव सीक्वेंस सो इट हला तुमरा ऑल अबाउट रिवर so we'll start from weathering so weathering is a process of you can say disintegration of rock disintegration so
any rock that exposed to the surface जेतले तुमरो rock surface को expose हुए igneous हो कि metamorphic हो कि any sedimentary rock by some process disintegrate होते बा breakdown होते ताको में weathering करते. So breakdown होला पर there are two things, either that it will deposit at the place of breaking or weathering, or it may drifted from the place of weathering. तो कौन कौन थी यदि drifted है जो that is called as your erosion. So disintegration होची erosion यदि move ହେଲା बा ताको हम कहते कौन इरोजन. यदि ट्रांसपोर्ट हला बा तुम कहछ कौन ट्रांसपोर्ट हला ताको कहते दैट इज कॉल्ड योर इरोजन. सो वेदरिंग प्लस इरोजन इज योर डेनुडेशन. कौन सी रॉक जति सरफेस को एक्सपोज होची एनी रॉक दैट एक्सपोज टू द सरफेस इट विल अंडरगो वेदरिंग एक्शन by disintegration action. So weathering is a surfacial phenomenon, but you can say it is a exogenetic process. Other tomorrow process जो है endogenetic volcano होची, इधर होची exogenetic process जहाँ operate on the surface of the earth. तो weathering रे भी बहुत importance होची. Like तुम्हें economical importance भी बहुत होची. Like it produces economic deposition and it helps to expose the subsurface rock. So upper surface rock weathered हो वा remove होगा तो lower rock will gradually uplift. So weathering can be of three types. तीनटा टाइप है तुम्हें weathering पाइबो. उनको कहते हैं physical और mechanical weathering और chemical weathering और जो बायोलॉजिकल. सो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग गोटे सिंपल मेकानिकल ब्रेकडाउन विदाउट चेंज इन कंपोजिशन. कौन गोटे तुम रॉक आनला तो खाली ब्रेक कर देला भांगी देला ताले ताको कोनती हमें फिजिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सम रिएक्शंस जो कि देयर विल बी चेंज इन कंपोजिशन. सो फिजिकल वेदरिंग भी डिसइंटीग्रेशन हुए, केमिकल भी डिसइंटीग्रेशन हुए, बट फिजिकल ले तुम्हारा कंपोजिशन चेंज हुए, ओनली डिसइंटीग्रेशन हुए. केमिकल ले डिकंपोजिशन हुए ता सहित कंपोजिशन चेंज हुए. देन बायोलॉजिकल बोथ है परिबो, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल. तो बायोलॉजिकल बाय मींस ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट हो एनिमल हो ता थ्रू जहां डिसइंटीग्रेशन हो ताको हम कहया बायोलॉजिकल वेदरिंग. सो दीस थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग ऑकर करे जो तरी की रॉक पूरा डिसइंटीग्रेट होते. So main things are tomorrow asio what are the different factors that will affect the weathering. So what are the different factors? So factors can be classified into two types. One endogenetic factor and also exogenetic factor. What is the endogeneity factor? What is the exogeneity factor? These type of factor. Endogeneity rock internal property रो जहाँ weathering को affect करता है को endogeneity कहती. Then external factor जहाँ अच्छी जो कि rock को affect करते during weathering तक कहते तुम्हारा exogenetic factor. तो endogeneity factor है तुम्हारा simple fast तुम्हारा rock composition नहीं परिवो. Rock structure नहीं परिवो. Other than physical characteristic of rock, like तुम्हारा rock color हो, grain size हो, ये सब affect करे कौन rock रो weathering capacity को. तो कौन सी rock रो weathering resistance कहते से weathering resistance हो, how much it will resist to weathering, that depends upon the composition. So rock which aggregate of minerals, so ultimately it depends upon the mineral content within the rock. So the rock ro composition which कौन तारा mineral content. So mineral content हमें तो determine करना थी by मोरो series अच्छी तो कौन करती Goldich stability series बाद जो तो तुम्हें bounce reaction series पूछा तो olivine to नहीं की तुम्हारा अच्छी हो कहाँ quartz पॉइंट अच्छी हो.
जोटी ऑलिविन होची लीस्ट स्टेबल, क्वार्ट्ज होची मोर स्टेबल। तो जे कोनसी रॉक, एनी रॉक दैट कंटेन ऑलिविन or that mineral that found in the upper part of the bounce series by जोटा हम गोल्डविच स्टेबिलिटी सीरीज कहउछंदी, that will be unstable or more easily weathered, more prone to weathering। और जोटा मोर लोअर पार्ट रे रहउछन बा लो टेम्परेचर क्वार्ट्ज हो ऑर्थोक्लेज हो, तो से माने मोर स्टेबल हेबे। तो क्वार्ट्ज नहीं ऑलिविन पांत को स्टेबिलिटी इंक्रीज करे। तो जे कोनसी रॉक रो कंटेंट अनुसार तुम जानि पारो वेदर इट विल बी more prone to weathering or less prone to weathering, but more easily weathered or less easily weathered। तो रॉक कंपोजिशन में तुम बाउंस रिएक्शन सीरीज हिसाब रे जानिबो कि कोठी को रॉक टा केते जल्दी वेदर हबो बा कोटा डिफिकल्ट टू वेदर। तब रॉक स्ट्रक्चर रे कोनोसी भी रॉक रो वीकनेस हो जी if any joints present within the rock or any structural defect present within the rock। यदि गोटे रॉक रे कोनोसी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट प्रेजेंट अछि ताले रॉक टा वीकेन हो। यदि रॉक टा वीकेन अछि ताले से माने इजीली वेटेड है। तो डेफिनेटिवली एमती किछि तुमरो आदरे एमती किछि कैरेक्टरिस्टिक नाही जोटा कि तुमे खाली सिंपल मन रखिबो। जदि भी क्वेश्चन तुमरो ट्रिकी पड़ला कि कोनसी रॉक जॉइंटेड रॉक अछि, कोनसी रॉक मैसिव रॉक अछि, कोटा अधिक इजीली वेदर्ड हबो, तो से आंसर तुमे चूज कर पारो जोटा होछि कि जॉइंटेड रॉक अछि बा जो रॉक रे तुमरो वीक प्लेन्स प्रेजेंट अछि, तो सेही रॉक टा इजीली वेदर्ड हबो देन अदर। तापर कोनसी रॉक रे जॉइंट रहिला कि तुमरो फ्रैक्चर रहिला ताहले दैट कैन आल्सो अक्युमुलेट वाटर अक्युमुलेट करिवो। तो कोनसी तुमरो सीट जॉइंट नियो कि जे कोनसी टाइप ऑफ जॉइंट नियो कोनसी भी रॉक रे, ताहले सो फास्ट तो मेकानिकली से माने वीकर थांती जो कि जॉइंट प्लेन एलंग से माने इजीली वेदर्ड हेबे। ता सहित तुमरो वाटर कैन परकोलेट कले मोर केमिकल रिएक्शन हे परिवो, ता सहित भी से माने वेदर्ड हे परिवो। सो कोनसी जॉइंटेड रॉक बोथ मेकानिकल एंड फिजिकली से माने इजीली वेदर्ड हे परिवो। बायोलॉजिकली भी हे परिवो केना बायोलॉजिकली प्लांट रूट पूरा इजीली पेनिट्रेट करि परिवो थ्रू द जॉइंट। तो जॉइंटेड रॉक पूरा वीकर थांती दो दे हैव कि कंपोजिशन ऑफ क्वार्ट्ज और समथिंग। तो सेठी तुमरो कंपोजिशन जहा थाओ जेहेतु तुमरो एठी स्ट्रक्चर ऊपर पळे आसी तण कंपोजिशन ऊपर डिपेंड करनी जदि से हार्डर मिनरल को नहीं तयारी हो कि सॉफ्टर मिनरल को नहीं तयारी ना। तापर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रे तुमरो ग्रेन साइज आसीबो, जदि कोर्सर ग्रेन रहइबो बा फाइनर ग्रेन रहइबो, दीटा कंडीशन तमे आसीबो कि गोटे रॉक जदि कंसिस्ट करची सिंगल मिनरल को नहीं की बा डिफरेंट मिनरल को नहीं की। तो जदि फाइनर ग्रेन अच्छी तो मोर फाइनर ग्रेन मोर कोर्सर ग्रेन भितर रिलेटिवली तुम देखिबो जोरा कोर्सर ग्रेन अछंती हेरा लेस चांस टू वेदर दैन द फाइनर ग्रेन। कहना फाइनर ग्रेन रे तुमरो सरफेस एरिया बढ़ी जाए, ता सहित फाइनर ग्रेन रे इजीली तुमरो परकुलेट कर परिबो। सॉरी जो फाइनर ग्रेन गुडा अछंती से माने कोन हबे इजीली वेदर्ड हे परिबे बाय तुमरो फ्लूइड एक्शन जो। अब अदर केसेस से देखले तुमरो कोर्सर ग्रेन जोगरा अछंती कोर्सर ग्रेन जो रहबो ताले अधिक पोरोसिटी रहबार चांसेस अछि, तो पोरोसिटी अधिक रहले भी से माने वेदर्ड हेबे। तो ग्रेन साइज हिसाब रे तुमे डिस्टिंग्विश तो करूछ तो डेफिनेटिवली किछ नै कि जे केमथि हबो। जदि तुमे सरफेस एरिया ताथरा ऐड करियो ताले जिते फाइनर ग्रेन हबो से माने मोर सरफेस एरिया नेबे, कोर्सर ग्रेन हेले लेस सरफेस एरिया नेबे। तो कोर्सर से फाइनर ग्रेन जदि जो तो अधिक सरफेस एरिया नउछ ताले अधिक वेदर्ड। तापर कलर जदि तुमे नबो ताले जो डार्कर कलर अछि से माने मोर हीट अब्जॉर्ब करिवे, जो लाइटर कलर अछि से लेस हीट अब्जॉर्ब करिवे। तो मोर हीट जो माने अब्जॉर्ब करिवे मोर एक्सपांड हेले मोर इजीली वेदर्ड हेबे। अगर बोलते तुम हेट्रोजीनियस रॉक और होमोजीनियस रॉक, जोटा रॉक टा कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल और सिमिलर मिनरल तुम मोनोमिनरल रॉक कहउछ, नहले इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल। जदि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल आसीबो ताले डिफरेंट एक्सपेंशन प्रॉपर्टी रहइबो ताले इजीली वेदर हेबे। जदि सिंगल टाइप ऑफ रॉक रहल मिनरल रहला ताले माने इक्वल एक्सपेंशन कंट्राक्शन देखबे लेस इजीली वेदर हेबे। तो ना सब होची इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। जदि तुमर फास्ट आसीबो कंपोजिशन जो कि तुम्हें गोल्डविच स्टेबिलिटी सीरीज पढ़ियो बा बाउंस एक्शन सीरीज तुम कहि परिबो। नेक्स्ट इज तुम रॉक स्ट्रक्चर जेनी तुम स्ट्रक्चरल फीचर्स लाइक तुम जॉइंट हो, बेडिंग प्लेन हो, लाइन ऑफ वीकनेस हो, फ्रैक्चर हो, द ऑल विल वीकन्स द रॉक। तापरे कैरेक्टर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रे तुम कलर होची जो डार्कर कटा इजीली वेदर हो।
कोर्स फाइनर जो फाइनर हम से अधिक इजिली वेदर हम बिकज इट ऑक्युपाइज मोर सरफेस एरिया ता सहित होमोजिनियस हेटेरोजिनियस जो होमोजिनियस थाए सेटा लेस इजिली वेदर हेटेरोजिनियस मोर इजिली वेदर तापर एक्सोजेनेटिक फैक्टर तुमरो डिफरेंट आछो फास्ट आछो हमरो स्लोप स्लोपा तुम ग्रेडियंट कहूछ स्लोपा ग्रेडियंट होची दीटा पॉइंट भितरे the height difference between two points separated by some horizontal distance जिते अधिक स्लोप हबो सेते तुमरो मोर स्पीड पाइबो मोर मैकेनिकल एनर्जी पाइबो कोनोसी जिंस बा मोर स्लोप हेले कोनोसी भी एनी रॉक हो if it will present the slope so it will be in unstable condition कोनोसी भी लेस फोर्स रे से ट्रिगर हे परबो तार मूवमेंट तो रॉक यदि मूवमेंट हबो लेस फोर्स रे ताको ग्रेविटी पुल करिवो ता मूव करिवो तालो वेदर्ड हबो तो मोर जते अधिक स्लोप होची सेते अधिक वेदरिंग हबरा चांसेस अछि हैला तनु सेते तुमरो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेदरिंग रेट बट स्लोप रे मन रखियो इट कैन नॉट वेदर डीपर वेदर कर परिबो नाही कहना डीपर वेदर करे खले कोन जगह रे तुमरो थरो वाटर हैला कि फ्लोइंग वाटर हैला तो स्टैग्नेंट हवा दरकार तो एटी कोन कंटीन्यूअसली मूवमेंट थाए स्लोप रे सेते डीपर वेदर हे परिबा नाही आउट इंपोर्टेंट फैक्टर इज हमरो क्लाइमेट सो सब क्लाइमेट पे तुमरो वेदर करियो सब क्लाइमेट रे वेदरिंग हो बट डिफरेंट क्लाइमेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग हो ना जो तुमरो एरिड क्लाइमेट अछि बा जोडा ड्राई अछि पूरा ड्राई क्लाइमेट अछि सो ड्राई क्लाइमेट तुमरो मोर मैकेनिकल वेदरिंग हो बिकॉज़ ऑफ एब्सेंस ऑफ वाटर बा तुमरो एरिड रीजन रे कोन थाए टेंपरेचर फ्लक्चुएशन भी अधिक होबी तो से जगह तुमरो मैकेनिकल वेदरिंग अधिक हो जोटे रेनफॉल अधिक होउची से जगह रे तुमरो केमिकल वेदरिंग अधिक हो तबे केमिकल वेदरिंग रा रेट इंक्रीज करे यदि 10 डिग्री राइज करियो टेंपरेचर ताले रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल हे जिवो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आको तुम्हें वैन ऑफ रूल कहा जाए सो एवरी तुम्हारा 10 डिग्री राइज केमिकल रिएक्शन डबल हो जाए तो जते केमिकल रिएक्शन में केमिकल वेदरिंग अधिक होबो इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्लाइमेटिक फैक्टर यदि ड्राई क्लाइमेट रहला ताले मोर मैकेनिकल वेदरिंग यदि मोर वाटर अवेलेबल है बा वाटर जोटी की तुमरो ह्यूमिड क्लाइमेट हो जोटी रेनफॉल होची से जगह तुमरो अधिक कम केमिकल वेदरिंग हो तापर और जो सरफेस एरिया किंदा अफेक्ट करे so surface area if any rock that occupies more area then it will more affected by weathering agent तो more affected hele surface area directly proportional to the weathering rate तो जते अधिक सरफेस एरिया हबो सेते अधिक वेदर हबो जते में जते फाइनर गेन होची से माने अधिक सरफेस एरिया ऑक्युपाई करंती तो मोर सरफेस एरिया विल प्रोड्यूस मोर वेदरिंग रेट तापर एटा फैक्टर तुमरो टाइम आछिबो जते अधिक टाइम पर जतो एटा एक्सपोज्ड हेक रहइबो सेते अधिक वेदर सो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ वेदरिंग रेट the types of physical weathering different type ratio फर्स्ट मोर वेरिएशन ऑफ टेंपरेचर जो आसीबो बाद में जोटा थर्मल एक्सपेंशन कंट्रैक्शन कहउछ थर्मल एक्सपेंशन तापरे तुमरो चेंज इन प्रेशर को पाई परिबो वेरिएशन ऑफ तो फ्रीजिंग थाइंग कोई पर एक्शन आगो अछि हैं
ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल तुम आसी परियो एरो सब আছে देखो टाइप्स ऑफ फिजिकल ब्रीथिंग तुम थर्मल एक्सपेंशन कंट्राक्शन आसीबो बिकॉज तुम जो जगह रे तुम वेरिएशन ऑफ टेंपरेचर पर डे अधिक थाए यानी कि डे टाइम रे बहुत हाई टेंपरेचर थाए नाइट टाइम रे बहुत लो टेंपरेचर थाए बा टेंपरेचर वेरिएशन बा ड्यूरिनल वेरिएशन ऑफ टेंपरेचर जो अधिक थाए से जगह रे रॉक एक्सपेंशन एंड कंट्राक्शन मोर फ्रीक्वेंटली हुए तो मोर फ्रीक्वेंटली एक्सपेंशन कंट्राक्शन हेले रॉक इजीली ब्रेक डाउन कर फ्रैक्चर डेवलप যদি রক অদর ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে কোন তোমার যদি হোমোজিনিয়াস থিব তাহলে ইকুয়াল এক্সপানশন কন্ট্রাকশন হবে এতে ইজিলি ওয়েদার হবানি যদি হেটেরোজিনিয়াস থিব রকটা ইজিলি অনইকুয়াল এক্সপানশন দেখাইব কেন जोड़क आम होमोजिनियस कहते मोनोमिनेलिक कहते पॉलीमिनेलिक रॉक कहते যদি पॉलीमिनेलिक ହେଲା তাহলে अनइक्वल एक्सपेंशन कंट्राक्शन हम डिफरेंट मिनरल विल एक्सपैंड एट डिफरेंट रेट तो इजीली वेदर हो सेमती डार्कर कलर रॉक हेले मोर हीट अब्जॉर्ब करियो मोर इजीली वेदर हम तो से अनुसार थर्मल एक्सपेंशन कंट्राक्शन को जगह होची मेनली बिकॉज ऑफ ड्यूरिनल वेरिएशन ऑफ टेंपरेचर तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर যদি কোন জায়গায় वेदर होची তাহলে सरफेस मेटल रा रिमूव हो सपोज धर एटा तुम सरफेस तो सरफेस जो तुम रिमूव करियो मटेरियल तो लोअर पार्ट ऊपर जितकी प्रेशर पड़े रिलीज हम एंड माने अपलिफ्ट हे अपलिफ्ट हेले जॉइंट प्रोड्यूस करते ताको हमें कोन कहते सीट जॉइंट कहते सीट जॉइंट बोली कहते तो सीट जॉइंट जो डेवलप हुए रॉक रे पैरेलल टू द ग्राउंड डेवलप हुए तो डेवलप होला परे जेतेडे रिमूव होवे माने लेयर बाय लेयर रिमूव होवे वेदर हे तो सेटा को हमें भी एक्सफोलिएशन कहते एक्सफोलिएशन तो कौन कह एक्सफोलिएशन बोली कह सोडा प्रेशर रिलीज होची बता हमें वेरिएशन ऑफ प्रेशर कहछ तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर कौन होवे बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ द अपर सरफेशियल मटेरियल इट विल तुमरो लोअर्स द लोड टू द लोअर मटेरियल जहाँ अच्छी तापर लोड डिक्रीज करिवो एंड लोअर मटेरियल अपलिफ्ट करिवो अपलिफ्ट हेले तुमरो डेवलप ऑफ अ जॉइंट हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस ताको हम सीट जॉइंट बोली कहंती तापर जब जॉइंट वंस डेवलप हो गेला तापर ग्रेजुअली से माने लेयर बाय लेयर रिमूव होते ताको कोन कहै जाय एक्सफोलिएशन कहै जाय तापर फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन ने कोन होय यदि कोन जगह रे फ्रैक्चर डेवलप होई छि कोनोसी रॉक रे बा जॉइंट डेवलप होई छि बा एनी ओपन स्पेस छोटे रॉक रे अछि ताले ओपन स्पेस भीतर कोन होबा सपोज धर रॉक रे जति ओपन स्पेस प्रेजेंट अछि ताले से ओपन स्पेस भीतर वाटर अक्युमुलेट करिवो सो व्हेन water will convert to ice the volume increase by 9% तो वॉल्यूम में 9% इंक्रीज करो ताले ई पार्ट को एक्सपांड कर जो एक्सपांड करी गले मोर रॉक मोर फ्रैक्चर टा और वाइडन ही जो तो ये प्रोसेस यदि कंटीन्यूअसली चलीबो पुनी वाटर अक्युमुलेट हो तन ग्रेजुअली सेरा फ्रैक्चर डेवलप हे कि कोन डिसइंटीग्रेट ही ताकू तुमर फ्रीजिंग था एक्शन तापर ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल सेम वे रे कोनोसी फ्रैक्चर प्रेजेंट अछि ततर वाटर अक्युमुलेट करबो व्हेन वाटर विल अक्युमुलेट इट विल क्रिस्टलाइज करिवो ताले सेतर मिनरल टा ग्रो होबो सो फ्रैक्चर को वाइडन करिवो तो ए जो प्रोसेस से तुमर कोन होबे मैकेनिकल वेदरिंग हुए तो आदरे तुमर इंपोर्टेंट जिंस होची एक्सफोलिएशन मन रखियो फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन मन रखियो जोतरे की तुमर कोन होबे वाटर अक्युमुलेट करके 9% इंक्रीज करे तो इति की इंपोर्टेंट आदरे नेक्स्ट हमारे तुमर केमिकल वेदरिंग तो केमिकल वेदरिंग बाय मींस अब केमिकल रिएक्शन पे जो तरीके तुमरो कंपोजिशन चेंज हुए जो फिजिकल रे केबे कंपोजिशन चेंज हुए ना सो केमिकल डिफरेंट टाइप रो अछि तुमरो हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस सो एग्जांपल तुमरो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट तुमरो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस तुमरो हाइड्रेशन रे तुमरो वाटर एडिशन भी सिंपल खाली को हबो वाटर एडिशन हबो हाइड्रोलिसिस रे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करबो H+ और OH- आयन कि आयन गुला रिप्लेस करेंगे अदर आयन विद इन द मिनरल तो सेटा होची डिफरेंस था तुम यदि जिप्सम कथा कहबो तो एटा कैल्शियम सल्फेट प्रोड्यूस होईची कैल्शियम सल्फेट वाटर ऐड कले खाली जिप्सम बट सीटी काओलिन तुम कन्वर्ट होची फ्रॉम द ऑर्थोक्लेस फेल्सपार तो ऑर्थोक्लेस फेल्सपार रू जो कन्वर्सन होची सेटी H+ आयन K+ को रिप्लेस करछ तो से जगह रे दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस जोतरे के अल्टरेशन होची तो जो कौन सी केमिकल वेदरिंग सब मन रखो कौन चेंज हुए कंपोजिशन चेंज हुए तो यदिटा तुम एग्जांपल तुम फेल्सपार जहाँ अल्टरेशन सब जगह हाइड्रोलिसिस हो पाए
ऑक्सीडेशन आसीबो जदि कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जोटा एग्जांपल तुमरो रोस्टिंग ऑफ आयरन तापरे कार्बोनेशन आसीबो जदि कि कार्बन डाइऑक्साइड एडिशन जदि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सहित मिसिकी कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करे जोटे कार्बनिक एसिड तापरे रॉक को डिसइंटीग्रेट करे जो बेसिकली लाइमस्टोन बेयरिंग रॉक पूरा अफेक्ट होते बाय कार्बनेशन तापरे तुमरो इट इज स्पेरोइडल वेदरिंग गुड आसीबो स्पेरोइडल वेदरिंग बा ताको हमें ओनियन स्किन वेदरिंग कहते तापर तुमर आसीबो एलिफेंट स्किन वेदरिंग चिलेशन गुड आसीबो लेसन बायोलॉजिकल देखिए स्पेरिडल वेदरिंग वो केमिकल ओनियन स्किन वेदरिंग इट इज कंसिडर्ड एज केमिकल वेदरिंग जो कि रॉक टा को हुए इट रिमूव्स लेयर बाय लेयर मेटल लाइक अ ओनियन हला तो कोनसी रॉक रे तुमर केमिकल एक्शन जो फास्ट सरफेसियल लेयर गोटे बाहरिबो तो एमती सरफेसियल लेयर बाहरी बाहरी धीरे धीरे इरोड हो बिकॉज ऑफ केमिकल एक्शन सेन तक कोन जाय स्पेरिडल वेदरिंग करे जोटा कि रॉक टू कौन लाइक ओनियन लेयर बाय लेयर पिलिंग हम ताको कह जाए ओनियन स्किन वेदरिंग और एलिफेंट स्किन वेदरिंग इट इज अ टाइप ऑफ वेदरिंग दैट फाउंड इन लाइमस्टोन रीजन मतलब कि देयर विल बी इरेगुलर वेदरिंग और लाइमस्टोन टेरेन अछि इरेगुलर वेदरिंग इज बाय इरेगुलर डिसॉल्व करछि लुक लाइक अ एलिफेंट स्किन तो एलिफेंट स्किन वाला देखो ताको एलिफेंट स्किन वेदरिंग कहते तो मन रखो दीज आर बिलोंग्स टू केमिकल वेदरिंग कैटेगरी से एटा इंपोर्टेंट अछि So biological weathering रे simple by organism way so we can कि divide into two types physical weathering by means of organism और chemical weathering by means of organism तो physical weathering हेले तुम plant root penetration होगा जोड़ा physical weathering रे सब best example otherwise केते organism अछंती कि जोड़ा कि rock eater थांती rock borer थांती जोड़ा कि कोनोसी stone रे कोन होल करिकी डुएल करते से सब भी वेदर्ड करते बाय मींस ऑफ मेकानिकल प्रोसेस केमिकल फॉसिल रो एक्सक्रीशन रो हे परिबो केतेक ऑर्गेनिज्म अछंती जोटा कि सिलिका ब्रेक डाउन करंती केतेक नाइट्रोजन ब्रेक डाउन करंती फ्रिक्शन टाइम रे तो से माने सब जाको वेदरिंग जिबे जोटा नाइट्रोजन फ्रिक्शन ताको चिलेटिंग एजेंट बोली कहआ जाय ता सहित ऑर्गेनिज्म पूरा डेथ हला परे तादरो जहा एक्सक्रीशन बे एसिड वगैरह से सब भी वेदर करंती है ना फोसिल एक्सक्रीटर भी एसिड रिमूव रिलीज वे से भी वेदरिंग करंती तो एनी तुम्हारो केमिकल प्रोडक्ट दैट डिराइव फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस अ केमिकल वेदरिंग तुम सेटा गोटे तुम्हारो केमिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग रे जीवो सो दीटा टाइप तुम कहि परियो बायोफिजिकल बायोफिजिकल बाय मींस ऑफ तुम्हारो मैकेनिकल प्रोसेस बायोकेमिकल बाय मींस ऑफ केमिकल प्रोसेस तो तादरे बायोफिजिकल ले तुम्हारो सबले प्लांट रूट कथा आसीबो नहले रॉक बोरर कथा आसीबो आ बायोकेमिकल केस तुम सबले आसीबो मेन होची कि सिलिका ब्रेक डाउन हो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो आ नहले अदर जो गुरा होची एक्सक्रीशन तो डेफिनेटिव किसी नाही तनो तुम खाली एति मन रखियो सो एटा तुम्हारो ऑल टोटल तुम्हारो वेदरिंग so it is more equilibrium solubility diagram मतलब कि मोर different solubility different pH condition रहसे different oxides मान so it is देखिबा तुमरा quartz देखिबा quartz होची highly soluble when pH is approximately greater than 10 आसे greater than 10 आसले मोर अधिक solubility देखिबा दीरार कंडीशन सेम थी गुड क्वार्ज अमरफस इज मोर सॉल्युबल देन क्रिस्टलाइन क्वार्ज जेकोसी एसिडिक कंडीशन न्यूट्रल कंडीशन हो दे आर नॉट इजीली सॉल्युबल दे ओनली सॉल्युबल इन कोन बेसिक कंडीशन हायर पीएच रे समान अधिक सॉल्युबल हो
नेक्स्ट मोर फेरस आयन रहला FeO. So it is तुम्हारा soluble below pH of about 7. 7 रे FeO टा more soluble. 7 टा हमर कोन कंसीडर करा जाय न्यूट्रल कंसीडर करा जाय. सो न्यूट्रल अधिक soluble हो. तपर Al2O3 जदि देखियो Al2O3 मोर आइदर हाई बा बेसिक कंडीशन रे अधिक soluble हो न हले एसिडिक कंडीशन रे अधिक soluble हो. सो से पे Al2-3 insoluble pH रेंज होछ 4 to 10. 4 to 10 देखा यारी भितर माने कोन रहउछन insoluble रहे. तो ए जगह रे हाईली soluble रहे 8 3 तो नहीं परिबो 4.5 पागा है ना. सॉरी 3.5 पागा. हमने तुम्हारा फेरिक आयन Fe2O3 is insoluble except under highly acidic condition. So this is होची तुम्हारा सॉरी this is होची Fe2O3. So Fe2O3 only तुम्हारा कौन acidic condition रे रहे. और ये जो आयरन टा Al2O3 टा 4 रे रहेबो 4 3.5 कहली 4 रहेबो. तो Fe2O3 तुम्हारा हाईली acidic condition रे ही soluble हो हाईली soluble. ताबला CaCO3 CaCO3 6 पाखापाखि तुम्हारा CaCO3 अधिक soluble रहबो जोटे कि SiO2 less soluble CaCO3 more soluble. से तुम्हारा the solubility of calcium carbonate and silica are inversely related to pH range 6.5 to 9. तो एठी कोन होची इंक्रीज करची सिलिका CaCO3 कोन होची डिक्रीज करची inversely related. So these are तुम्हारा different solubility ता अनुसार तुम्हारा chemical reaction में से डिसॉल्व हेबे डिसॉल्व होला ही डिसइंटीग्रेशन हवा कोई.